मैंने कहा यार मुझे आप ये बता दो, आप में और आपके दोस्तों में क्या फ़र्क है जो इंग्लैंड नहीं आए? उसने कहा जी मैं जो भी कमाता हूँ ना मैं बचाता हूँ, और वो जो भी कमाते हैं ना वो खर्च करते हैं। For me that was a massive lesson. मतलब वैसे आप ये बात करोगे शायद किसी को ये बात समझ ही नहीं आएगी, ठीक है? वो समझेंगे ये जो बचाता है ये बहुत सियाना है, बड़े अच्छे घर का सियाना बच्चा है, और जो खर्च करते हैं वो बड़े याश हैं, वो बड़े बेवकूफ़ हैं। But in reality what I take from this is, और हैरानगी की बात 50-50 लाख रुपया दे के, और आपको पता है कि फैमिली, जब एक फैमिली आ रही है, मियाँ बीवी 2 बच्चे, वो 1 करोड़ रुपए का खर्च है। Families crying on the phone, please मुझे को अकोमोडेशन दे दो, हमारे पास रहने की जगह कोई नहीं है। 50 लाख रुपया कोई छोटी रकम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं है। एक छोटी फैक्ट्री लग जाती है, और ये पैसा आप एक कुएं में फेंक के मजदूरी करने निकल गए। कुछ ऐसे लोग भी मैं मिला उन्हें कि जिन्होंने अपने बनाए हुए पैसे कोई जमीन बेच के कुछ करके 50 लाख रुपया लगा के बाहर आ गए मजदूर बनने के लिए, और चले हो 50 लाख उधर लगाते अपनी जात के ऊपर, तो तुम अपना काम बढ़ाते। लेट्स लुक एट क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दे स्टिल वर्किंग क्लास 10 years down the line। वो वहां पे शायद बंदा टॉर्चर हो रहा है, लेकिन पीछे जो लोग हैं वो सब सेट हो गए। सर कौन सेट हुआ है? पीछे के गुजर ने घर बनाया है, घर बनाया ना, सेट हो गए। It doesn't work like that. It doesn't work like that. गड्डियां किनियां उन्होंने कोई गड्डियां, वो भी जमाने चले गए जब वो 70, 80, 90 में जो आए हुए थे ना इधर, शायद उन्होंने अभी जो ये 2020 के बाद जो लोग गए और ये न्यू लॉज के अंदर गए, ठीक है, और जो न्यू प्रोसीजर्स के तहत गए, पीछे कुछ नहीं बनने वाला। बराए मेहरबानी अपने बच्चों के ऊपर का ख्याल रखें, अपने बच्चों को, गोरों को, don't hand these kids over to the Brits or the UK or the, you know, or Dubai or any America or places they go to be mishandled. ये जो mindset है ना, the grass is greener on the other side, ये मार रही है। बच्चे ने घर में शोर डाला, मैंने जाना ही जाना है भाई, it's not what you think it is. It's so important that people realize it's not what you think it is. Assalamualaikum, Sakib bhai, how are you doing? Islam, okay. We just met for the first time. Okay, right now. yeah. नहीं, साकिब रसूल, you've been in the UK अब 26 साल तकरीबन, और you're based out of Gloucester. Based out of Gloucester. और आप जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आपको हम डालेंगे, run multiple businesses and mostly into real estate. Yeah, property and retail. Property and retail. And then the retail, you have franchise of chicken shops. Chicken shops. Is that what you call them? Yeah, yeah. Chicken shop. It's a very fascinating culture UK के अंदर, by the way. When I first Everybody got loves to UK, chicken. Everybody loves chicken. all the migrants love chicken. Everybody loves chicken. Even the locals. Yeah. Right. जो एक यूनिक फिनोमेनन है जो आपसे डिस्कस भी करना चाह रहे हैं, इज़ दैट आप उस पर्टिकुलर जनरेशन से हैं जो एक्चुअली यूके के अंदर पैदा हुई थी, और आप ऑफ कैमरा भी हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि जो सूरत हाल है, माइग्रेंट क्राइसिस कह सकते हैं उसको, यूरोपियंस तो एटलीस्ट को माइग्रेंट क्राइसिस के तौर पर व्यू करते हैं। हमारे यहाँ अभी तो फिल्में बन रही हैं डंकी जैसी, उनको एक एंटरटेनमेंट का एक पॉइंट है। अभी वो एक सोफिस्टिकेटेड गुफ्तगू हमारे माशरे में नहीं शुरू हुई कि शायद ये 70s नहीं है जैसा आप खुद फरमा रहे थे, 80s नहीं है, 90s भी नहीं है। आज एक बच्चे का, जवान आदमी का वहाँ जाना और अपने आप को सेट करना एक ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है। क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? विल स्टार्ट विद यू, व्हेन डिड यू, आप पैदा हुए फिर पाकिस्तान आए, मे बी जस्ट स्टार्ट विद दैट। द स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि आई वाज बोर्न इन द यूके, और एट द एज ऑफ 12 आला तालीम हासिल करने में पाकिस्तान आया, ठीक है। और 86 से लेकर 98 तक आई वाज इन पाकिस्तान। 4 years I worked in Pakistan. Right. And in 98 then I went to the UK with the pressures of my elders. जी. As per generally hota hai. And that's going to be a running theme in this conversation. That's a running theme because I've gone through it myself. Or against my will of actually wanting to live in the UK, I had to live in the UK. And this is the 90s. This is 98. Right, 98 में एक जवान 24 years old. 24 साल का एक जवान जो यूके में पैदा हुआ है, शायद वो कोट एंड कोट लग्जरीज देखी हैं उसने एक सिविलाइज सोसाइटी की, वो Okay. मैं जानबूझ के उसको ज़रा थोड़ा सा एक कर रहा हूँ।
एयरकोट सिविलाइज सोसाइटी की, तो वो 24 साल की उम्र में नहीं जाना चाह रहा वापस। ये बड़ी आई थिंक कभी एवरेज व्यूअर के लिए बहुत ज़्यादा ये I lived in Pakistan for 12 years. 4 साल मैंने यहाँ काम किया और जब मैं इंग्लैंड गया हूँ एंड जनरली हमारी जो इन्वायरमेंट है वहाँ इट्स अराउंड जनरल वर्किंग क्लास और the environment I went from was slightly a better class in the sense of a bit more exposure somewhere around the middle around class. the middle class, a bit more exposure towards more professional environment. That's not the environment I went to when I went to the UK. So straight away, being a person who had some, exposure, I just thought, no, it doesn't make sense. Like elders would say, because they were from, I'd say the salaried class, or because they had jobs, they had never done businesses. They were of this mindset that जो UK जाता है वो set हो जाता है. Because salary का bracket वो बेहतर हो जाता है. Salary का bracket बेहतर हो जाता है. That was obviously they had the exposure of people who went in there in the 70s and the 80s and so on and so forth. So they just felt hey, this better way of life. So yeah. यानी जो माइग्रेशन की गाड़ी है उस sort of अभी भी 70s 80s और 90s की स्टीम पे चल रही है. अगर देखा जाए तो बड़े यही कर रहे हैं ना. जो बाहर गया है वो सेट हो गया. जली की तरह सेट हो गया. जिस मर्जी मोल्ड में डाल दो. Exactly. But Because now, it's easy, isn't it? Grass is greener on the other side. जी. Without having to go through the whole notion, it's just like an easier alternative कि इसको बाहर भेज दो ये ठीक हो जाएगा. शादी करा दो सेट हो जाएगा. शादी करा दो सेट हो जाएगा. Yeah. So आपका भी एक सिमिलर एक्सपीरियंस था बिकॉज आपके वालिद मोहतरम 70s के अंदर हैड ऑलरेडी वो गॉन थ्रू द ग्राइंड, वो तजर्बा कर चुके हुए थे. सो देयर वाज अ नोशन आपके घर में, आपके जो एक पीयर ग्रुप होता है ख़ानदान का, एक्सटेंडेड फैमिली का, बुजुर्गों का, कि यार मतलब सेट हो ही जाता है. बट वो कैवियाट जो बहुत बड़ा है और जो बहुत बड़ा बाट है वो ये है कि वो जो 5 6 7 8 साल इंसान अकेला वहाँ मजदूरी करता है, उसका इंसान की मेंटल हेल्थ के ऊपर, और जो वो वैल्यू एक्सचेंज कर रहा होता है कि जो कमाई वो कर रहा होता है और उसके एक्सचेंज में जो चीज़ें वो गिव अप कर रहा होता है, शायद टेंजिबल ना हो लेकिन वो इंटेंजिबल चीज़ें शायद ऐसा नुकसान, जनरेशनल नुकसान दे के जाती हैं. Definitely. If you think about the kind of compromises and sacrifices the individual has to make on every level, their self-respect, their esteem, the quality of life they were used to, they have to downgrade. Do you understand? The whole point is you progress, but to go back so many steps. The funny thing is, I'll give you an example. Once I was in a car with somebody, and we were going through some villages. So, मुझे याद अच्छी तरह पड़ता है कि the guy says to me कि यार बस इधर एक गांव में घर होना चाहिए. And I had only been in England for maybe 2-3 years at that time, finding my feet. And it was a big eye-opener. कि भाई गाँव में तो तेरे पास घर है. बैक होम तेरे पास गाँव में घर है. बड़ा अच्छा घर होगा. और अच्छा घर होगा. और तू सब कुछ को छोड़ के दूसरे मुल्क के अंदर जाके तू गाँव में घर ढूंढने के चक्कर में. राइट, काउंटी में जाके रह. Just think about it. Messed up. It's messed up. Because what you do is you leave what you have to go out and work your backside off. Compromise, sacrifice everything to end up exactly where you are. और इसको हम इसको इस क्वांटम में ले आते हैं. बड़ी मजे की आपने बात छेड़ी है कि लेट्स से एक फैक्टर है, एक एस्पेक्ट ज़िंदगी का, वो है इकोनॉमिक एजेंसी, आज़ादी, कि यार अच्छी तनख्वाह मिल रही है, मैं बड़ी अच्छी पोस्ट पे लगा हूँ, मैं बड़ी अच्छी ड्यूटी कर रहा हूँ. वो एक एलिमेंट है. बाकी चीज़ों को हम कैटेगराइज कर लेते हैं. इंसान की जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, जो सोशल कंफर्ट्स होते हैं, जो पीयर ग्रुप या ट्राइबल ग्रुप या फेमिलियल ग्रुप होता है जिसको वो छोड़ के जाता है, इन कैटेगरीज में अगर हम देखना शुरू करें तो इमीडिएटली एक जो आप बात करते हैं कि आपने पॉडकास्ट से पहले भी जिक्र किया था कि यार मुझे तो समझ आ गई है एट 40 समथिंग कि इंसान सोशल एनिमल है और सबसे पहली चीज़ उसका पीयर ग्रुप है. इसके इर्द गिर्द कौन लोग हैं. बिल्कुल. एंड जब आप एक फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट हैं, जिस तरह आप डील करते हैं, बिकॉज वन ऑफ द बिजनेसेस दैट यू डू, मैं ऑडियंस के बेनिफिट के लिए बताता हूँ कि आपने फ्लैट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे आप रूम्स रेंट आउट करते हैं. I rent out rooms. उसकी वजह से आप पूरी दुनिया के माइग्रेंट्स को डील करते हैं. 20 साल हो गए मुझे करते हुए ये,
और 20 सालों में I've had the opportunity of meeting people from all over the world who've come to the UK और जिन्होंने कमरे लिए हैं. They could be from African backgrounds, European backgrounds, Asian backgrounds. So when I got to meet all these different people over the last 20 years, I saw so much similarity. The migrant mentality is the same, irrespective of whichever country they're coming from. यानी बुनियादी फितरत इंसान की तो सेम ही होगी. बिल्कुल. एंड वो लोग अब एक इमीडिएट आप स्टेप डाउन करते हो कि आप जब अपनी लेट्स से आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बिकॉज हम आज के दिन में तो अज्यूम कर सकते हैं कि 50 लाख से करोड़ रुपया बंदा खर्च करके पहुंचता है वहां पे लीगली स्पीकिंग. Exactly. अगर गैर कानूनी रास्ते से आ रहा है तो टेक्निकली वो भी गैर कानूनी है जो कर रहे हैं. नहीं, but they get a legal status when they get there. वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा साफ सुथरे तरीके से स्मगल हो रहे हैं वहाँ पे. चलो, put it that way. फ्लाइट लेके, स्टूडेंट वीजा लेके, कोई केयर Put it that way. एक बंदा 50 लाख करोड़ रुपया खर्च करके आ रहा है तो अजम्पशन यही होगी कि वो लोअर क्लासेस से या वर्किंग क्लासेस से नहीं है, वो मिडिल क्लास से एक्चुअली. तो पहला जो इमीडिएट धचका लगता है कि आप इमीडिएटली इकोनॉमिक क्लास अपनी एक डाउनग्रेड कर देते हो. Wow. Yeah. दैट्स द फर्स्ट थिंग. स्ट्रेट अप आप मिडिल क्लास से जाके सीधा वहां जाके, बिकॉज वहां पे जाके आपको किसी ने मैनेजरियल या क्लर्कशिप की जॉब नहीं देनी. बिल्कुल नहीं देना. आपको मैनुअल लेबर की या वर्किंग क्लास जॉब भी मिलेगी, टैक्सी, कसाई की दुकान, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. Yeah, definitely. इसको क्या कहोगे? Working class कह लोगे? Working Yeah, working लेबर class. क्लास. Labor class, चलो, that word is a bit heavy for this lot. But they're working class people, yeah. Working Right. class people. इकोनॉमिक पहला धचका लगा. दूसरा, आप कल्चरली इंटीग्रेट नहीं कर पाते. Culturally integrate, yeah, initially issue है, because it's going to take you what, 4-5 years, 6 years before आपको वहाँ के norms ही समझ आएंगे. चीज़ें कैसे, और फिर आपका starting point क्या है. अभी the difference is अगर आप एक पढ़ा लिखा बच्चा लेते हो और किसी proper यूनिवर्सिटी में वो जाके एक proper डिग्री करता है जहाँ वो 1-2 साल लगाता है, वो बेहतर इंटीग्रेट होता है कल्चरली. भाई ये जो बेचारे आते हैं जो वो कहते हैं ट्रप्पर टाइप डिग्रियां लेने जो किसी काम की नहीं है. बिजनेस मैनेजमेंट और वो की जो कॉमर्स की डिग्री, और जो वो यूनिवर्सिटी में उन्हें 2 दिन लगाने सिर्फ 2 घंटों के लिए. ठीक है, और उन्हें कोई इंटीग्रेशन नहीं, और उनकी पूरी क्लास में सारे माइग्रेंट्स ही आए हुए. ठीक है, मैंने ऐसा केसेस देखे. और क्या इंटीग्रेशन उन्हें करनी है. ज़रा सा वो बाहर निकलेंगे नहीं with the locals because obviously they can't afford. ज़ुबान नहीं समझ. मतलब मैंने तो पिछले definitely 2-3 सालों में जो ये काफ़ी जो लोग आए, I haven't seen them integrate with anybody. They don't have the capacity to do so. The funny situation is, again, it's going back to वो जो गाँव वाली मिसाल है. ठीक है कि गाँव में घर था लेकिन बाहर जाके गाँव में घर बनाना है. ठीक है, इसी तरह पाकिस्तानी यहाँ से निकलते हैं और इंग्लैंड आके वो सबसे पहले पाकिस्तानियों को ढूंढ रहे होते हैं. Because they need to find familiar people. Because they can't go to non-familiar like सुडानी हो गए, सोमालिया हो गए, पोलिश हो गए. क्योंकि पता है, तो पहली चीज वो क्या करते हैं, इस पाकिस्तानी ढूंढते हैं. मस्जिदों में आएंगे, लोकल शॉप्स पे जाएंगे और वहां से वो पाकिस्तानी ढूंढ रहे होंगे. एंड यू थिंक वाओ, बिकॉज वहीं से उनको मदद मिलनी है, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल. और एक और फैक्टर भी है कि क्योंकि इकोनॉमिकली वो इमीडिएटली एक क्लास में डाउनग्रेड हो गए हैं, तो वो मोस्ट लाइकली ये है कि वो उन घरों में रहेंगे, उन मोहल्लों के अंदर रहेंगे जो वर्किंग क्लास इमिग्रेंट या गेटोइजेशन का प्रोसेस भी शुरू होता है. क्योंकि फिर फाइनेंशियल प्रेशर्स भी होते हैं ना. सस्ते से सस्ती जगह लेनी है ताकि ओवरहेड्स ना पड़े. ठीक है, तो दे आर नॉट गोइंग टू गो एंड स्पेंड £1,000 a month where they can get away with £400 a month. तो 400 फिर कहाँ होगा? In the working class areas. So that's also a situation, isn't it? How did you deal with the problem of having a migrant father as a young person? Like, आपके वालिद साहब left when you were after you were born. No, sent you back. No. The thing is, initially, Dad had the times were different at the time. 70s की बात है. 70s were different, and by the time हमने होश संभाला, अब्बू को हो गए थे मैं 15-20 साल UK में. जॉब उनके पास प्रॉपर जॉब थी. We had our own house and so on and so forth. So
the troubles he went through initially when he must have come over, we didn't see. और फिर एक और interesting scenario ये है कि not only in Pakistanis but in every migrant, their starting point is कि भाई हमने आपको सेट करना है, जो सेट करना है, और सेट करके पहला काम करना है, पीछे अपना कोई घर बनाना है या कोई घर वालों को पीछे सीधा करना है, और बस हम 5 साल के लिए इधर आए, 10 साल के लिए इधर आए. और हर बंदे की ख्वाहिश ही होती है, एंड लाइक माई फादर हैड इट एज वेल, कि मेरे बच्चे पाकिस्तान पढ़े. ठीक है. सो वी वर इन दैट सिचुएशन. सो अप टिल द एज ऑफ 12 यूके में थे, और फिर अबू की भी ख्वाहिश. ड्यूरिंग दैट 12 years माई फादर ट्राइड 2-3 times कि हम लोग पाकिस्तान किसी के सेटल हो जाए, लेकिन हमें वो क्या कहते हैं, स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता था क्योंकि हम टेस्ट पास नहीं कर सकते थे, क्योंकि उर्दू नहीं आती थी, and so on. But finally in 86 we found a school which was a bit more how should I say, accommodating. And they gave us an admission in 86 में हम रुक गए फिर. I think 87 में we got an admission. And your father always thought कि मैं वापस पाकिस्तान ही जाऊंगा. और उनका भी ख्याल था, बिल्कुल था. But that never ended up happening. It did happen, but it unfortunately just didn't happen the way maybe he thought it would happen. Or would happen. Which is unfortunate. And then आप अपनी school life up until FSC and then university maybe, you spend it all in Pakistan and you start working. No. I only went up to FSC and then I started working. And then आपने काम शुरू कर दिया पाकिस्तान के अंदर. Yeah. And वो भी real estate का काम था. Property का. And you felt comfortable. And I did, because I was always of this mindset that I remember. See, another thing happens. When I'm 12 years old, I get sent to Pakistan and I got told I've got 3 sisters and a mum, I have to look after them. So from the age of 12, I always had that in my mind. I've got to look after them. So by the age of 17, 18, my thought process was, right, my dad's worked enough. I've got to come up with ways that my dad doesn't have to work. So this thing kicked in. ये वो generational element भी आता है. Right. So this thing kicked in as well. Which might not be true. अगर एक बच्चा उसके वालिद साहब उसी के, यानी अगर हम पाकिस्तान में आप होते और आपके वालिद यहाँ काम कर रहे होते, he could have worked well into his 60s and you wouldn't be bothered by it. Exactly. But because वो एक element of separation आ जाता है. आ जाती है कि चलो if he's staying in the UK just for the sake of work, तो मैं मजदूरी कर लेता हूँ. हम इधर काम कर लेते हैं, तो वो वापस आ जाएंगे फिर. और वापस आ जाएंगे. राइट. तो एक साइकिल शुरू हो जाती है एक फैमिली यूनिट के अंदर के, जहाँ पे एक बच्चा है जो उसकी बेसिकली उसका बचपना ख़त्म हो जाता है, और एक फादर फिगर है जो बेसिकली अपनी फैमिली के एक्सपीरियंस से महरूम हो जाता है. Definitely. And this is there's a gap. And this is not just you. This is हजारों if not लाखों पाकिस्तानी है जो यूके में और यूरोप में बाय एक्सटेंशन इस प्रोसेस के थ्रू अभी जा रहे हैं. एंड फर्क सिर्फ ये है कि 70s और 80s के अंदर जो आपके वालिद गए, 90s में जब आप खुद वापस गए, कि वहाँ पे कवानीन, नॉर्म्स, मार्केट के ट्रेंड्स वो कुछ ऐसे थे कि शायद उसके अंदर एडजस्टमेंट पॉसिबल भी थी. Adjustment. See, at that time, things were much more simpler. We were needed more. Like, how should I put it? I think they needed us as much as we needed them. At that point. Right? And when I compare it with today, huge difference. ज़मीन आसमान का फर्क है. उस वक्त इतनी hardship नहीं थी. In the 80s, in the 70s, even up to the 90s, what people are going through right now. It's crazy. The difference, the cost of this whole movement, it pressures the individual so much. It's crazy. आपने मुझे कुछ मिसालें दी थी कि लाइक टेंजिबल, कि उन्होंने कुछ लॉज चेंज किए हैं. लॉज चेंज किए हैं, फीस बढ़ा दिए हैं, फिर उसके बाद people have to work and earn more money to pay the more taxes. Cost of living is very difficult. Rents are very high. Everything's very high. But not the funny thing, the unfortunate thing, which I've seen, is in the examples I've seen people work a whole year, get money, and then just pay for the fees for the next year or 2 years, visa or fees for their degree.
which is not going to come in handy to them at all. क्योंकि they come over with this thought process कि मैं उधर जाके काम करूँगा, पैसे बनाऊँगा, उस पैसे से अगले साल की फीस दे दूँगा. But that's not happening. ठीक है? You're set up for failure. 20 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते लीगली. ठीक है? फिर आप जाके लीगली काम करते हो. फिर आपने पढ़ाई क्या करनी? इलीगली अंडर द टेबल. अंडर द टेबल बेसिकली. तो उसमें तो आपको तो ऑटोमेटिकली आप मिनिमम वेज से कहीं गुना नीचे आ जाते हो. और फिर अनफॉर्चुनेटली मजबूर हैं because there's so many people that if you went back 3 years ago, there was a huge crisis. You could not find people to work 3 years ago. Right now, there's excess people. ठीक है? And there's more people coming in. Like everyone is like the examples they're quoting is so and so गया था. वो भाई वो किस वक्त गया था, किस साल में गया था, कितने साल उसने कितना स्किल्ड था. उस स्किल की बात लेता है कि even if he went 10-15 years ago, times were different. जो टाइम्स आज हैं और जो challenges आज हैं, मतलब if somebody came 15 years ago वो challenges नहीं थे. You can't make that comparison and say, chalo, I'm going to take the same step. You need to really understand where you're going. Yes, दूसरा element ये आता है from the British government point of view कि जिसने पढ़ना है वो हमारे पास आए. लेकिन ये लोग पढ़ने के लिए नहीं जा रहे. ये समझते हम उधर जाके लेफ्ट राइट हो जाएंगे, लेफ्ट राइट होके सेट हो जाएंगे. लेकिन उन्होंने इतना मुश्किल कर दिया प्रोसेस को कि आप बड़ी बड़ी सैक्रिफाइसेस और तंगियाँ लोगों को देखनी पड़ी. यू थिंक जो वो एक्सचेंज कर रहे हैं कि वो अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी पीस, अपनी प्राइम ऑफ देयर यूथ अपनी जो वो लगा रहे हैं और जो उसके एक्सचेंज में वो सेट हो रहे हैं इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली, आपको लगता है आज वो ट्रेड ऑफ जो है वो इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव यार. अब वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा वो ट्रेड ऑफ. नो नॉट एट ऑल. यार फिर वो क्या कहना चाहिए, we spoke about this earlier as well. They're not making those guys like the guys used to be back in the 70s. These guys can't handle it. These kids can't handle it. नहीं, पहले जो एक जनरेशन थी साइलेंट सी. Not just silent, they were more resilient. Rugged, tough, resilient. These guys are too much on the sensitive side. Worrying about their skin and their, issues like that. No, but it's a sincere concern also because के even if अगर एक इंसान rugged enough है कि वो इस सख्ती के थ्रू जाए, क्या अगर वो अपनी जर्नी ऑफ लाइफ के थ्रू जाता विदाउट लीविंग पाकिस्तान और वो 50 लाख करोड़ रुपया लगा के उसकी जगह वो छोटी रेडी लगा लेता, चिप्स की दुकान लगा लेता, नॉट इवन मैं डिस्पैरेज भी नहीं कर रहा, कोई छोटा बिजनेस खोल लेता, छोटी परचून की दुकान लगा लेता, कोई एक मार्केट में गैप ढूंढ लेता, जैसे कोई प्रिंटिंग की शॉप हो. आपने एक मिसाल दी थी अपने ही एक अजीज की फ्रॉम बेस पे. The reason I'm quoting this is कि ये चीज मेरे साथ हुई है. Where I have spent 26 years. So जब मैं इंग्लैंड गया था मैं 24 साल का था. And this year I'm going to be 50. So 26 साल मैंने वहाँ गुजारे. 26 साल मैंने लोगों को यूके में भी देखा काम करते हुए और मैंने पाकिस्तान में भी देखा काम करते हुए. ठीक है जी. मेरे साथ के दोस्त जो नहीं इंग्लैंड आए उन्होंने भी सब कुछ वही अचीव कर लिया जो मैंने अचीव किया. गिव और टेक, राइट. ये नहीं हुआ कि मैं इंग्लैंड चला गया या मेरे साथ के जो लोग इंग्लैंड गए उन्होंने तरक्की की और पाकिस्तान में जो रहे उन्होंने तरक्की नहीं की. It's a journey. Everyone's going to go through this journey. जिनको जल्दी मिलता है वो उनसे चला जाता है, उनको फिर बनाना पड़ता है. If you look at it from an income perspective. But the whole thing, it's a journey. It's not about the money. It's the journey you're going through. और जो journey अगर आप गलत journey पे चल पड़े हो, naturally it's going to be more harder for you to turn around. फिर लोग कहते हैं जी वो बस सीखेगा ना जी, सीखेगा. अबे लाजमी उसको तुमने दलदल में धकेल के सिखाना है. You're making him worse off than what he was. एक लड़की है, they're 22, 23 years old. Whatever you've got, wherever they are,
ब्रेक इन द मेंटल सेंस, They break in their mental sense. They break in their स्पिरिट टूट जाता है. spirit, everything. आपने- and you've seen this happen. I've seen this happen. I've seen this happen so many times. And then they break also with their aspirations, ख्वाब शाब सब. what they thought what they wanted to be. अगर आप वो देखो तो that's sad enough itself. So you're saying कि अगर एक बंदा अपनी जर्नी को टाई अप ना करता विद द आइडिया कि मैंने यूके जाना है या यूरोप जाना है स्पेसिफिकली, और वो सिमिलर एफर्ट्स यहाँ पे करता, बिल्कुल. उतनी जान माल मारता, शायद उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं. लेकिन वो बेनिफिट किसी और तरीके से करता. राइट. बेनिफिट सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है ना, या एसेट वैल्यू सिर्फ बैंक बेनिफिट्स नहीं है. मतलब उसका एक्सपोजर बेहतर होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती थी, उसकी घर का some माहौल. people they get to a level where they achieve more by having less. I've seen that as well. You know, some of us, we need more to achieve what we want to achieve. Some can achieve more than us by having less in different ways. But the gist of it, or the bottom line is, chances of ये जो ज़हन में बात बनी हुई है कि भाई बाहर जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, that is so wrong. That is so wrong. That is criminal right now. Are you bitter about your experiences? I'm not. See, look, I've been very blessed. I've been very blessed in the sense that I've throughout been living with my family. I never lived away. To this day, I live with my mother. अगर मैं इंग्लैंड गया भी था तो अम्मी बहनें साथ थी, मेरी फैमिली मेरे साथ थी. जो कि एक्सेप्शनल केस है. जो एक्सेप्शनल केस है, जो बंदा इस तरह माइग्रेट करता है. सो मेरा तो एक किस्म का घर ही वहाँ था. तो मैं थ्रू आउट, मुझे कभी कागज़ों के लिए फालतू पैसे नहीं देने पड़े, मुझे कभी वकीलों के पीछे भागना नहीं पड़ा, मुझे कभी जाके अननेसेसरी बर्डन्स इन माई जर्नी लेनी नहीं पड़ी. अगर मैंने फॉर एग्जांपल 1200, 1400, 1500 पाउंड एक महीने कमाया, तो मुझे जाके उसमें से मतलब अपने पे 200 या 300 खर्च करके तो बाकी बचा के नहीं रखे कि मुझे वकील को पैसे देने, या गाँव भिजवाने. ठीक है, ये समथिंग लाइक दिस. नहीं, पैसे तो मैं वैसे भी भिजवा, पाकिस्तान तो मैं वैसे भी भिजवाता रहूँ. ठीक है. सॉरी. But when you have this burden of unnecessary expenditure, like solicitor fees and, you know, immigration fees and so on and so forth, this makes things harder. So then, because I didn't have this burden, I didn't have these problems, when I looked upon people who did, and मुझे बड़ा अफसोस होता था कि यार ये किन चीज़ों से गुजर रहे हैं. मतलब it's painful to watch. But on the other hand, I could turn a blind eye, no skin of my nose. लेकिन जब आपके साथ एक चीज़ नहीं हो रही और दूसरों के साथ हो रही है, and then you think to yourself, why is they putting themselves through this? And then the biggest comparison of this last 26 years is, like I said earlier, मेरे साथ मेरे हम उम्र लोग जो इंग्लैंड छोड़ के इधर आ गए, nobody was worse off. I won't quote his name, but hopefully he'll know who he is. He was working he basically came, at the time, 2000 में, I had a restaurant. And through a common friend, he आता है और he had done his MBA. And he had paid some money to come over. Or he was the son of a doctor. And my friend said to me, कि यार इसको किचन में जॉब दे. तो मैंने कहा यार मेरा दिल ही नहीं मानता, मुझे भी पाकिस्तान से आए हुए 1.5-2 साल हुए थे, तो मेरी अभी वो हिस्स मरी नहीं थी to lose the value of people who are educated. तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मैं तो नहीं जॉब देता इसको. उस वक्त हमें we used to pay about £140 a week to people who were working in the kitchen, like porters and stuff like this. And कहता यार I'm not gonna, you know, I said to him, I'm not gonna give him a job. मुझे शर्म आती है इसको जॉब देते हुए. हम उम्र था 23-24 साल उम्र थी उसकी भी. Anyway, long story short, he went to Birmingham.
Went to Birmingham 2-3 days later. I called him. How are you getting on? कहता है यार बुरी आदत सुबह 11 से लेकर रात 2 बजे तक मुझसे काम करवा रहे हैं. मैंने कहा okay. And he was working in a restaurant, washing up and everything. मैंने कहा पैसे कितने देने तुझे? £80 a week. मैं हैं £80 a week. मैं कहा यार वापस आ जा. मतलब I'll give you half the work you're doing there and we can pay you £140 a week. वापस आ जा. खैर वो वापस आता है. He's with us for about 5-6 months. हमारा एक और दोस्त था, उसके साथ इकट्ठे वो रहा करते थे. उस दोस्त जिसके साथ वो रह रहा था, he was working in a place, वहाँ इमिग्रेशन का छापा पड़ता है. वो उसके फ्लैट पे जाते हैं. वहाँ इस लड़के की डिटेल्स पड़ी हुई थी. इमिग्रेशन वाले ने उससे कहा कि भाई वी वांट टू नो हु दिस गाय इज. ठीक हो गया. अभी सारे मशवरे दे रहे हैं उसको, भाग जा, दूसरे शहर चला जा, दूसरे शहर चला जा. इमिग्रेशन के पास ना जाए कि फिर रजिस्टर हो जाएगा कि तेरा केस स्टार्ट हो जाएगा and it could go in your favor or against. तो बेहतर है गायब हो जा. And I'm sitting there thinking, no man. मैं कहा वापस चला जा. मुझे कहा तू पागल है. इतने पैसे लगाए. मैंने कहा समझना कारोबार किया था, नहीं चला. और नहीं चला, जाया हो गए पैसे. Go home. अल्लाह की करनी थी, उसने सुन ली मेरी बात and he came back. Within 6 months, credit cards started in Pakistan and he was selling credit cards. Within a year, he became, I think, a supervisor of that credit card section. From there, he carried on. And in the beginning, the first 6 months, year, 2 years, every time ko kaam uska positive hota, he would send me a text message and say, thank you, Saqib. I've been promoted to this. I've been promoted to this. He became bank manager in numerous banks. And today he's some kind of area or regional manager for some bank. Now the same kid, agar wo England rehta, kya kar leta? He would have owned a restaurant today. Maybe. Or he could have driven taxis. Probably. Chances are there. Because environment aapka ye hai na. Hum kaun sa the bankers ke andar baithe hue and so on and so forth. But he left and look where he got to. I occasionally see him on Facebook. He's traveling the world, meeting ambassadors and stuff like that. So that means he's done well for himself. Kafi arsa ho gaya rabta nahi kiya. How people forget, eh? But another friend of ours, again 2005, 2006, Allah doesn't see where he's passed away now. He came to Pakistan. But he made a decision. I've had enough. I can do better. He came here, he achieved a job in the UN. He worked there for, I think, about 10 odd years. Like he had a heart attack and he passed away. It was one of those things. But he progressed. So ye jo myth hai, see, it's got to the stage now कि अभी पागलपन start हो चुका है. 50 लाख रुपया कोई छोटी रकम नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं है. एक छोटी फैक्ट्री लग जाती है. और ये पैसा आप एक कुएं में फेंक के मजदूरी करने निकल गए और इस उम्मीद पे कि 5 साल बाद वो काम सीधा हो जाएगा. मैं लीगलाइज हो जाऊंगा शायद. मतलब इज दैट नॉट क्रेजी? कोई थ्रिल का एलिमेंट इन्वॉल्वड है. क्या थ्रिल? क्या मुझे समझाओ ना, थ्रिल क्या है इसमें? गोरी औरतें गोरा रंग. There's definitely, in Pakistan, maybe there's very fair-skinned women to, Ogle that. Yeah. No, I think there's a lot of, काफ़ी लोग ये myth भी बेचते होते हैं. पिछले दिनों एक op-ed भी आया था अखबार में, मैंने पढ़ा था, मैं हंस पागल हो गया था कि पंजाबी मिडिल क्लास goes out for libidinal adventures in Europe. और वो इसलिए डंकी लगाते हैं और इसलिए वो ये like that's nuts. अभी मैं तुझे बताता हूँ. Ridiculous assessment नहीं है तो situation. ये बड़े अभी मैं बताता हूँ. बड़े prominent intellectual हैं by the way. Obviously, going back 10 years ago, I used to see very rarely कि हमारे जो लड़के उधर कि they've actually hooked up with anyone who's even reasonably worth looking at, right?
when अक्सर मेरी उनसे ये बहस हुआ करती थी या मैं मजाक शाक उड़ाता था तो मैं कहता था यार मुझे एक चीज़ बताओ, वो इराकी आएगा, कुर्दी आएगा, ठीक है, his choice and selection, you guys just sell yourself so cheap so quickly For batting women. I'll leave that to you to kind of visualize what kind of, but they could do better. But again, there's only so far you can go with greasy hair. Do you understand? And smelly armpits. Yeah. Right? There's only so far you can go. सरसों का तेल धोना पड़ेगा. Yeah. So you think that there is एक familial pressure होता है, क्या economic fantasy होती है कि यार पता नहीं वहाँ जाके क्या होगा तुम्हारे साथ. देखो. Because there's a lot of people जो यहाँ पे वैसे push भी करते हैं इस idea को, अगर आप जा सकते हैं तो आप जाएं. Let's hit you with a real reality. Migrant mentality. I asked this question to a Pakistani लड़का था, अगर 25-26 साल का, सिक्योरिटी में था. मैं तो 4-5 महीने पहले मैंने उसे पूछा होगा. मैंने कहा यार मुझे आप ये बता दो, आप में और आपके दोस्तों में क्या फ़र्क है जो इंग्लैंड नहीं आए. उसने कहा जी मैं जो भी कमाता हूँ ना मैं बचाता हूँ, और वो जो भी कमाते हैं ना वो खर्च करते हैं. For me that was a massive lesson. मतलब वैसे आप ये बात करोगे शायद किसी को ये बात समझ ही नहीं आएगी, ठीक है. वो समझेंगे ये जो बचाता है ये बहुत सियाना है, बड़े अच्छे घर का सियाना बच्चा है, और जो खर्च करते हैं वो बड़े याश हैं, वो बड़े बेवकूफ़ हैं. But in reality what I take from this is, and I asked him why, he said क्योंकि मुझे कल का पता नहीं है. So a person who is living with this constant fear, is he really living? Is he actually living? और वो जो लड़के दोस्त हैं उसके जो अपने घर में रिश्तेदारों में मतलब वो पैसे खर्च कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, वो पैसे खर्च करके उसके बदले एक एक्सपीरियंस, एक तजर्बा, कोई चीज़ ले रहे हैं. बात समझिए? Even if they're just enjoying themselves. Just enjoying themselves, and that's giving them a certain level of happiness which is going to allow them to experience something. And this guy, बेचारा, is doom and gloom. बचा लो पैसे, बचा लो पैसे, बचा लो पैसे. अभी आप चल पड़ो इसके आगे. Migrant mentality. And I heard this from a quote from a Jewish guy on Facebook. And he explained it. Migrants have money not because they earn more, it's because they save more. See, okay? I have seen I wouldn't like to say hundreds, but dozens and dozens of people living in the UK जिन्होंने सारी जिंदगी काम करके पैसे बनाए, पैसे बना के एक प्रॉपर्टी ले ली, प्रॉपर्टी लेके किराए पे लगा दी, और करते 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 उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी गुजार दी. And just recently, last year, a guy died in Cheltenham. He was an Indian Gujarati. Maybe 30-40 properties owned in Cheltenham. But what kind of life did he live? If you think about it. And I should have mentioned that he was in Cheltenham, because now I can't tell you what the next thing was about him. Because people might relate to him. No. And I should have told you it's an Indian Gujarati as well. Can you kind of delete that one? We'll figure it out. Why don't you tell us the next thing about him? An absolute miser. Of course he was. Because he lost the ability to part with money. A lot of people, by the way, would push back आपकी बात पे and argue कि जो उसके बच्चे और पोते हैं ना, they're going to have that life. चक्कर फिर ये है कि देखो उनको भी वो लाइफ नहीं मिलनी, because if they haven't been taught how to enjoy successful or any the good things in life, because if the father never was spending and allowing them to learn, now their kids are, for example, in their 40s, right? Not everyone has the ability to, they're going to suddenly come into money and know how to spend it. Hence, वो एक मिसाल बनी है ना कि बच्चे उड़ा देते हैं सब कुछ. वो मिसाल बनी भी है ना. That's why. वो समझ नहीं होते उनको. Because throughout their life they've seen, खर्चा नहीं करना. यार
Okay, chalo, I'll put it another way. I've met numerous people who've got this mindset. It's absolute criminal to spend your money. To spend your own money is criminal. ये उनकी thought process है through their elders. ये पैसे नहीं खर्च करने. जबकि in reality, because they're all working class mentalities. Jabki in reality, and I hope you agree with this one, is money is a means to achieve certain things you want to achieve and experience certain things. You understand? You spend money, you experience things. And that's how you grow mentally, and you have a bit more awareness of things, and the luxuries of, not luxuries, but the good things in life. Luxuries? Okay. So migrant mentality is save money. Don't spend money. But in that saving, they've gone and deprived themselves of actually living. फिर वो चीज़ होती है उनका normal living ही यही है उनके लिए normal living ही यही है बात समझे But it's not normal. पर फिर वही define normal उनके लिए normal यही है. So you'd say it's unfortunate that they're living like that. And that's the key reason they don't integrate. जो बड़ी सबसे बड़ा जो statistic है वो ये है कि मुसलमान integrate नहीं करते in the Western society. कोई गोरा आके नहीं कहता मेरे साथ बैठ के शराब पियो, ठीक है? बल्कि majority तो गोरे भी, which I know, a lot of them, they don't drink. ये वैसे ही चीज बनी हुई है. If you go into generally the upper 30s and upwards, majority of them, they don't drink. You understand? So there's so many ways of integrating, yet people don't. Because they're living to save. They're living to save. They're living to save. ये तो चले एक पूरी कैटेगरी होगी ऑफ वर्किंग क्लास इमिग्रेंट्स जो अभी आ रहे हैं 50 लाख करोड़ रुपया खर्च करके आ रहे हैं. What about जो जनरेशनली वहाँ पे लोग हैं? I mean, I'm sure you've वही माइंडसेट तो उन्होंने बनाए हुए ना. माइंडसेट चले सिमिलर है लेकिन जो बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे हैं वो तो इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं. Definitely देखें, I've met people like myself who were born in the UK. Again, majority of them were from working class backgrounds. And the general trend was, don't spend money. Do you understand? The limited kids or people I've met whose parents were businessmen and they had businesses, okay, maybe slightly different mentality. Possibly slightly different mentality, because in business naturally they have the ability to spend. And we're at हम तीसरी जनरेशन तक आ गए, चौथी तक आ चुके हैं. Definitely चौथी तक आ चुके हैं. So your kids would count as चौथी वाली कैटेगरी जो उस उम्र we में would be the first, second, the third. So my father, us, and then the kids. नहीं, आगे बच्चे तो थर्ड हैं, बट उनके उम्र के उनके हम उम्र बच्चे हैं जो फोर्थ जनरेशन बिल्कुल fourth generation होंगे. जो लोग 60s और 70s में बिल्कुल गए थे. बिल्कुल. तो देयर आर किड्स इस वक्त जो 12-14 से लेकर 25 साल के होंगे, 20-25 साल के होंगे, who are fourth generation. बिल्कुल होंगे. Asian Britishers कह लें आप, पाकिस्तानी ब्रिटिश कह लें आप. If for example, they might be fourth generation, but their ties are so strong. Still you think? Naturally, शादियां नहीं उन्होंने कराई होंगी घर से पीछे घर वालों से, अपने गाँव वालों से शादियां कराई होंगी ना. आपको लगता है ये टूट रहा है काफी ज्यादा? वो काफी टूट रहा है, but there's an element which is still there. You think they still go back to their house in Gujar Khan? Some do, not all of them. But number decrease कर रहा है. हाँ, definitely. Because I don't see, मैं for example अगर आप remittance trend को भी देखें तो I don't see a lot of them reinvesting in real estate back home in the future. अभी तक तो चल रहा था. There's a big thing amongst Pakistanis, which is investing in property. It comes to us like through generations that we have to do this. Property हमारा कौमी खेल है. और कौमी खेल, exactly. So अभी, because I dabble with property myself, or I've had a bit of exposure there, they're more than comfortable going and investing in Dubai and Morocco and so on and so forth. And I remember Turkey, and they go and invest there. But naturally, because of Pakistan and Pakistan's situation, they're not comfortable. And then the horror stories which come out of Pakistan. कब्जा हो गया, फलाना हो गया. Exactly.
रिश्तेदार हो गए, रिश्तेदारों ने वो क्या नाम है, चार दीवारी बना के नहीं वो चार दीवारी नहीं, मतलब वही खा पी गया। ले कुछ नहीं। हाँ नहीं, तो इस वक्त आपको नहीं फील हो रहा कि जो बिलो 40s पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स हैं, लेट्स से वो फर्स्ट हैं या सेकंड या थर्ड या फोर्थ जनरेशन भी हो, आई डोंट थिंक क्लाइंटेल में बिलो 40 लोग आ रहे होंगे। क्लाइंटेल ऑफ रियल एस्टेट below 40, okay, let's say if you look at the professionals, now there's good like जी, well doctor, earning engineer के, professionals वकील के, in the UK who are Pakistani origin, married with Pakistani, you know, origin women and so on and so forth, who are third or fourth generation in the UK, but they're not comfortable in investing here. Like they know their returns are not just the returns are not there. And the element of security and so on and so forth. एंड ये एक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स या इनसिक्योरिटी है, या आई थिंक यू थिंक उनकी एसोसिएशन खत्म हो गई पाकिस्तान के साथ? Association भी खत्म हो सकती है, that's a reason as well. पीटीआई बहुत फैसिनेटिंग फिनोमेनन था इसके अंदर। पीटीआई ने आई फील लाइक एक रीइन्विगरेट किया है मेरी कॉन्शियस मेमोरी के अंदर, जो खास तौर पे यूके कम्युनिटी है। If you actually look at every rally which takes place, मुझे एक चीज सीखने को मिली 2015 में। There was a property exhibition and I took part in it. यूके में? In the UK. और that was the first time I realized, मैं सोचता था ना कि we are second generation or first generation migrant. First generation would be my father, right? Well, my father would be the migrant, the first generation migrant, okay? Or would he be the migrant only, not the first generation? I would say the first generation migrant. Okay. So in 2015, I realized first generation migrants are coming in 2015 as well, and 2014, and 2006, 6 and 8, and in 2000. So where I had this thing in my head that ये जो first generation migrants थे, ये 70s के आए हुए। Yeah. अच्छा. The next thing which I learned from there was the mentality is the same. चाहे मेरे वालिद 1970s या 68, 69 में जब भी आए थे, जो उनकी मेंटालिटी थी, वही मेंटालिटी 2014-15 में जो माइग्रेंट आया हुआ था ना, वो मेंटालिटी उसकी भी वही थी। और वो क्या थी? और वो ये थी कि हम इधर आएंगे, पैसे कमाएंगे, पीछे घर बनाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। और फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन जाता कोई नहीं। फिर जाता कोई नहीं। Okay, my father tried, but it didn't work. It worked to some extent. Anyway, the reason those people were in that property exhibition was कि हम अभी यहाँ पैसे कमा रहे हैं, तो कोई एक इधर प्लॉट ले लें पीछे, और किस्तें उसकी देते रहे, इसलिए आए हुए थे ना। Okay, moving on from that, the PTI question. All these rallies you'll see यूके के अंदर, in the UK, फर्स्ट जनरेशन का, it's the first generation. बट आपके जहन में वो 70s में आए थे, बट एक्चुअली वो 2000s में भी आए हैं। वो 2000s में भी आए हैं, 2010s में भी आए हैं, 5s में भी आए हैं, 15 में भी आए हैं, 24 में भी आए हैं अभी। To this day, अभी जो पिछले महीने लड़के हैं, the first generation is coming into Pakistan, into the UK. और वो सारे जाके वो फिर PTI के लिए खड़े हो रहे हैं, for example. You will get very rare second generations participating. Oh, so for your kids, to some extent, like, did I participate in any rally for PTI? I can't remember. Personally, इसके बावजूद कि आप स्कूल पाकिस्तान में गए थे, मैं स्कूल पाकिस्तान गया था। The detachment, the physical detachment from the local polity है, तो आप उस politics I'm more logical. In my head, I think it's more logical. Like, I have my full support for him, for the party, but I don't. Of course. Yes, PTI all the way. Right? Anyway, but what they do, I think they're just creating a bit of a spectacle. They don't. You think ये अजीब कुछ नहीं करती? I don't think so. You don't think नवाज शरीफ को उनके फ्लैट्स के बाहर हरास करना अच्छी चीज़ है? That's good comedy, that is. क्या नाम उस बच्चे का? शायान? That's good comedy. You gotta let that happen. And he's first generation, right? Shayan is. And I was really happy when I found out, you know, those boys who came from Birmingham. I think they were from Birmingham.
वो जो उसके कंटुट्टे वो बड़े बदतमीज हैं उसके, वो जो गालियां देते थे सामने नवाज शरीफ के जो बंदे बाहर खड़े होते हैं ना, बड़े गलत बोलते हैं लोगों के सामने. And they tried it on with the wrong people and they battered him. That was lovely to watch. Right. Little bit of wow from my side, and the reason I was inclined and I asked you for this was, for God's sake, Stop migrating. stop. How shall I put it more strongly? Like, अपने बच्चों के साथ ज्यादती ना करें. ये बहुत ज्यादती कर रहे हो आप लोग. पैसा दे के ज्यादती कर रहे हो उन बच्चों की. और ये तरीका नहीं है टू टफन देम अप. वो जो ये सोच आई भी है ना कि विल टफन देम अप, कि ये मुश्किल वक्त से गुजरेंगे, ये टफ हो जाएंगे. भाई उनको ये टफन करने का तरीका नहीं है, तोड़ने का तरीका. ये तोड़ने का तरीका है. ठीक है. और पैसे दे के, यार पैसे दे के आप तोड़ रहे हो उन लोगों को. वही पैसा अभी जहन में, लुक एट द साइकी ऑफ पीपल नाउ. 50 लाख रुपया खर्च कर देंगे, उधर वो भेजेंगे एक डिग्री करने के लिए जो किसी काम की नहीं है. ठीक हो गया. इस उम्मीद पे कि शायद ये सेट हो जाए. उस सेट होने के चक्कर में 4-5 साल खज्जल कर देंगे. ठीक हो गया. जवानी की उसकी. This is another thing which everybody needs to learn. You don't get the time back. Money comes and goes, you won't get the time back. भाई उसको 50 लाख रुपए की कोई साउंड तरीके से मदद अपनी सुपरविजन में कारोबारी कोई काम करवा दो. इधर कोई मुल्क का भी भला हो जाएगा. कोई 2 बंदों को नौकरी दे देगा. और वो जो पढ़ाई कर रहा है, जो किसी काम की पढ़ाई नहीं है, वो साल जो लगा रहा है वो किसी काम का नहीं है. ठीक है. या 2 साल लगा रहा है फॉर एग्जाम्पल. कम ऑन, व्हाट आर यू गाइस डूइंग? This is a simple thing, like I heard Mr. Tate say this, right? Andrew Tate. Right. एक और एक्सपर्ट. Right. And he was so right. The UK government put children in uni, they put them in debt of £45,000. यानी एक एवरेज स्टूडेंट है, Right? 45,000 पाउंड का वो 45 से 48,000 पाउंड की डेट में वो आ जाते हैं 3 साल की यूनिवर्सिटी डिग्री करते हुए. ठीक है. To some extent, some of the degrees which they do is reasonable. Majority students उधर भी मस्ती करने जाते हैं. अगर वो 18 साल का बच्चा, ठीक है, चला जाए बैंक के अंदर and ask them to give him a loan, they won't give him a loan because they think he's not geared up enough. बस यूनिवर्सिटी के लिए दे देंगे. भाई यूनिवर्सिटी की पता है कि उधर से इन्होंने यूनिवर्सिटी को फीस देनी है और उधर लैंडलॉर्ड्स को देने, और लंदन की और जिस भी शहर की इकॉनमी है उसको चलाना है. बैक एंड पे सारा, और बाद में ये पे ऑफ करता रहेगा क्योंकि हम इसके नाम के अगेंस्ट लगा देंगे. ठीक है. ये जुल्म कर रहे हैं उधर बच्चों के साथ. These kids will realize later on in life. Right now they don't understand. अगर पाकिस्तान में पूरी इंडस्ट्री है जो गाइडेंस काउंसलर्स की, पूरे डिपार्टमेंट्स हैं, दफ्तर हैं, 30 मैन ऑपरेशंस जो बैठ के सिर्फ बच्चों की कॉलेज डिग्रीज और उस प्रोसेस को पूरा करते हैं. Amazing. बैक एंड पे वो कमीशन लेते हैं. जो ये छप्पड़ यूनिवर्सिटीज है ना, अच्छा, उनसे कमीशन उनकी सेट हो जाती है पर सीट. हाँ. और फ्रंट एंड पे बच्चों को अच्छा वो जो कंसल्टेंट्स बने हुए फॉर दी स्टूडेंट्स 15-20 लाख चार्ज करते हैं बच्चों Right. से, जस्ट टू गेट देम इनटू दोस यूनिवर्सिटीज. 22-year-old kid, आप उसको 50 लाख रुपया देते हो. ठीक है. अगर उस 22 साल के बच्चे को 50 लाख रुपया आप दोगे ना, तो ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी देयर इज अ वेरी गुड चांस ही विल हैव अ बेटर आउटकम देन व्हाट ही इज डूइंग इन द यूके. यानी कारोबारी सिलसिले में, कारोबार में या कुछ कोई ट्रेडिंग में, कोई दुकान डालने में, कुछ, और घर बैठ के अपने घर वालों में, जिसमें वो अटेंड करेगा शादियां भी और फौजियां भी, एंड यू नो ही इज स्टिल पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड ही वाज फ्रॉम. ठीक है. आई सीन पीपल जो 10-10 साल के लिए घर नहीं वापस आ सके क्योंकि उनका प्रोसेस फंस गया. बल्कि रिसेंटली, okay, I won't quote the place and I won't quote the niggas. Yeah. So recently, somebody, he was working for me
It could have been in any one of those places, right? After 17 years, he got his paperwork and he visited his home after 17 years. तो 17 साल के लिए वो अंडर द टेबल काम करते हैं? वो चखे मारा था, बिल्कुल. यानी 17 साल के लिए वो मिनिमम वेज के लिए भी He was hiding constantly. यानी अगर आप एक बंदे को एक्स तनख्वाह देते हैं तो उसको हाफ एक्स मिलेगा. हाँ. और उसके बाद अभी मैं बताता हूँ. When I actually spoke to this guy, for his thought process did not match his age. Now work that one out. He was, I think, somewhere near 40. But the conversation which was coming out of his mouth was maybe of a 20-year-old or 22-year-old, because mentally he hadn't grown. रगड़े के बावजूद. He's just keeping confined in a very simple, small space, talking about his past experiences because he has got no more new experiences to talk about. 17 साल का गैप आ गया. Do you understand? It's like jail. It's a jail. And no word of a lie, जब मैंने उससे कई दफ़ा बात हुई, and finally he left us, which was, we were so grateful because he was an absolute cartoon, that guy was. He hadn't grown. Mentally, he hadn't grown. वो अभी भी 20 साल का था. It was astonishing. वहीं से तो मैं जब ये चीजें देखता हूँ and I see कि अच्छा, one thing I'll also say is it's very important. चीजें जो मैंने या generally आप देखते हो ना, 20 साल बाद more or less वही हुआ होता है, right? Like for example, if this guy's come and I've seen 17 years later, it's dumbed him up. So 9 times out of 10, if another person gets stuck in the system 10, 15 years, यही होगा. he's going to get dumbed up as well. I've seen somebody got stuck in something and he got depressed. It took 5, 7 years, he got depressed. Chances are somebody else stuck in that situation is going to get depressed as well. बात समझ? और हैरानगी की बात 50-50 लाख रुपया दे के, और आपको पता है कि फैमिली, जब एक फैमिली आ रही है, मियाँ बीवी 2 बच्चे, वो 1 करोड़ रुपए का खर्च है. टिकट सारी मिला के तो 1 करोड़ रुपए का खर्च है. I've had, going back 6-8 महीने पहले, families crying on the phone, please मुझे को accommodation दे दो, हमारे पास रहने की जगह कोई नहीं है. लोगों ने Airbnb में डबल ट्रिपल प्राइस पे उनको accommodation लेनी पड़ी क्योंकि मार्केट में accommodation नहीं थी. चलो जी, accommodation मिल भी गई. बच्चे, okay, I've got one delivery driver. He has to work क्योंकि he has to pay the bills. He's got his children in the car while doing deliveries. And you know why that is? And this is very common, by the way. That's the only time you can spend with them. काम तो उसने करना है क्योंकि उसको 2-2.5 हज़ार पाउंड तो बनाना है, जिसमें उसने बिल्स देने, उसने घर का किराया देना है. घर का किराया और बिल्स देने में उसका 1500-1700 पाउंड लग जाना है. डू यू थिंक वापस इसलिए नहीं जाते कुछ एक शर्म का भी एलिमेंट होता है? 100% मुंह दिखाने लायक. और this is another thing I'll say to everyone. खुदा का वास्ता, you don't owe nothing to anybody. तुम 2 दिन की बातें बनोगे and everyone will carry on क्योंकि हर बंदे के घर में अपने तमाशे बने हुए. Life move on. I have had 3 boys come and see me about a month ago. तीनों नौकरी ढूंढ रहे थे. किधर? एक क्वेटा का था, एक चकवाल का था और एक शायद लाहौर का था. ठीक है. उनमें से एक लड़की के पास जॉब थी, 2 के पास नहीं थी. अकोमोडेशन भी चाहिए थी उन्हें और जॉब भी चाहिए थी. तो जब मैंने उनसे बैठ के बात की कि यार, come on, this is a long journey. Do you think it's really worth it now? उन्होंने कहा जी पैसे लगा के आ गए. मैंने कहा यार, do you think time within the next couple of years, if you do something good, you can make this money back? मैं कहा जो तंगियों में से आप गुजर रहे हो, does it make sense? तो मैंने शुगर में उनसे एक लड़की को कहा, मैं कहा जी अपना फ़ोन नंबर दो अपने वालिद का, मैं तुम्हारे वालिद को फ़ोन करके बताऊँ किस हाल में तुम रह रहे हो. कहते नहीं. So the fear of कि अब्बू क्या कहेंगे,
is keeping people there. Do you understand? Jabki, as a father, the first thing I would do, and I'm not saying this from this perspective to make my kids soft, and you know I'm not soft. I don't make things soft for my kids. But it's common sense where you've got to use your brain and think, you know what? Is it worth putting this person through this or my son through this? Is he actually going to come out better on the other side? That judgment a father can make. But the children do not want to involve or inform their fathers. I'm in trouble, help. I'm in trouble, help. मैं वापस आना चाहता हूँ. So you think वो जो प्रेशर होता है कि अब शादी हो गई है, अब तो सारा पिंडाल भी सज गया है, मौलवी साहब भी आ गए हैं, बिल्कुल ठीक है, जहेज भी बन गया है. मैं तो वैसे I'm from that mindset that if it doesn't आखिरी मिनट तक भी अगर if it doesn't make sense walk away. ये ट्रेनिंग नहीं हुई ना बच्चों की. बस फिर यहीं से स्टार्ट करो. सारी कौम की कलेक्टिव साइकी के अंदर देखिए this goes out to all the parents. ठीक है. I don't know how to put it, like try not to make the mistakes your parents did. ठीक है. And that's the starting point. क्या ख्याल? That's the starting point. कि वो गलतियां जो आपके वालिदैन ने की हैं आपके साथ आपकी अपब्रिंगिंग में शायद उनको रिपीट करने से कोई बेहतर रिजल्ट नहीं निकलेगा. कोई बेहतर रिजल्ट नहीं निकलता. जितने को आप जोगे थे उतने को जोगे आपके बच्चे होंगे. Exactly. The first starting point तो ये होना चाहिए ना. इसलिए बहुत एक हाई सेल्फ अवेयरनेस रिक्वायर्ड है जो हमारी कौम में नहीं है. Self awareness. Okay. Stop assuming. Stop assuming. Let's just start from the solution. लोगों को ये बस कह दो कि वो गलतियां कोशिश करें, वो गलतियां ना करें जो आपके वालिदैन ने की थी. बस. Let them. अब सोचें इसके बारे में. सोचें इसके ऊपर. कुछ उसमें से टार्जन निकलेंगे ऐसे जो कहेंगे जी हमारे वालिदैन ने बहुत ठीक किया था. थोड़ी देर उनसे बैठ के बात करो ना, फिर वो खुद उनकी बातों में एडमिट होना शुरू हो जाता है कि हमारे साथ बड़ी जाती हुई थी. It's out there because everyone wants to. Nobody wants to say anything bad, but I'm not saying it in a bad way. Parents didn't know. That's all they knew, and that's all they did. But don't pay money to mess up your children's lives. Torture your kids. And torture your kids. That money can be spent so much better, and your children can be so much better. Like if they went on a family holiday with that money. I'm not even kidding. मजाक भी नहीं कर रहा. कुछ तो कुछ सीख के आते वापस. The kind of experiences they would have, yeah. या अगर मिसाल तौर पे छोटा मोटा कारोबार खड़ा कर लें इकट्ठे मिलके. बिल्कुल. अच्छा, मैंने एक और चीज़ अपनी लाइफ टाइम में देखी है. There were certain guys who were my age group back in when we were in our mid-20s. दिल का जोर लगा लिया उन्होंने इंग्लैंड पहुंचने के लिए. हर दफ़ा जाते थे वीज़े कैंसल, वीज़े नहीं मिलते थे उन्हें. ठीक है जी. और out of frustration they lived in Pakistan. By the mid-30s, they all were making such good money. तो विजिट पे आना शुरू हो गए इंग्लैंड. जो 20 साल की उम्र में उनकी बस उनका था कि किस वक्त हम पहुंचे और वीजे उनके जो वो मिलते ही नहीं थे. And I saw those same people and I used to think, wow, mid-30s में वो आ गए. So it's a journey. It's not about the money. It's the journey. And you are not going to get everything by Allah Ta'ala ने आपको इस दुनिया पे डाला इस चीज़ें सीखने के लिए. And you've got to go through that journey. And allow your children to go through that journey. ये जो पूरा और फिर लोग कहेंगे भाई ये भी तो जर्नी है. Yeah, for God's sake. ये worthwhile भी तो होनी चाहिए ना जर्नी. Very worthwhile and logically, and you got to do some calculations, be calculated. इस सब्जेक्ट को क्लोज करने से पहले मैं I want to move on to another thing, लेकिन मेरे जहन में क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि why do you think कि अगर clearly fail कर रहा है आगे जाके, they're not किसी ऑब्जेक्टिव में, इज इट कि आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है और वो अपने मैट्रिक्स पे सक्सीड कर रहे हैं. लोग खुशी तो होंगे जो बार बार भेज रहे हैं बच्चों को. अच्छा, दिस इज अ वैलिड पॉइंट. दैट बीइंग ओल्डर टुडे, माय थॉट प्रोसेस इज यार इतनी मुश्किलें से जो गुजर रहे ना गुजरे. ठीक है जी. लेट्स लुक एट क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. दे स्टिल वर्किंग क्लास 10 years down the line. वो वहां पे शायद बंदा टॉर्चर हो रहा है, लेकिन पीछे जो लोग हैं वो सब सेट हो गए. सर कौन सेट हुआ है? पीछे के गुजर खाना घर बनाया है, घर बनाया ना, सेट हो गए.
It doesn't work like that. It doesn't work like that. ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ कोई गड्डियाँ वो भी ज़माने चले गए जब वो 70 80 90 में जो आए हुए थे ना इधर, शायद उन्होंने अभी जो ये 2020 के बाद जो लोग गए और ये न्यू लॉज के अंदर गए, ठीक है, और जो न्यू प्रोसीजर्स के तहत गए, पीछे कुछ नहीं बनने वाला। चलो जी 10 साल बाद अगर कुछ बन भी गया, ठीक है, तो हो सकता है वो बंदे अगर पाकिस्तान रहता तो 3-4 साल में कुछ गाड़ियाँ बन जाती। बट एक क्लियरली कैलकुलेटेड गैम्बल है जो हमारे लोग खेल रहे हैं। No, it's a gamble. Don't call it a calculated gamble. अच्छा, ज्यादा एक गैम्बल की साइड पे है। It's a gamble. ठीक है जी, because you're jumping into the world of the unknown and you're paying to go in there. ठीक है, तो I would class this as a gamble. हाँ, कैलकुलेटेड गैम्बल ये होता कि अगर वो 50 लाख रुपया पकड़ते, अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करते, उसको एक बेहतर इन्वायरमेंट इसी मुल्क में देते और कहते जा पुत्र काम कर, ठीक है, उस बच्चे को भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है अपने घर वालों के लिए कि यार देव इंट्रस्टेड मी विद दिस काइंड ऑफ मनी। और अगर फिर भी वो सारे पैसे ज़ाया हो जाते, उसकी जो लर्निंग होनी थी ना वहाँ से, he would have gone and come back up again. You have to understand, in business, when you lose money, you're learning as well. And it's perfectly fine to lose money. Because you've learnt the next step. अब यूके 50 लाख रुपया दे के ख्वार होके बंदा वापस आ जाए, ठीक हो गया, या वापस ना आए और उधर रह के तो मतलब उस फैमिली से ही हट जाए। अभी आप you quoted me examples yourself where people are just different from they used to be when they went abroad. ठीक हो गया? So that's a gamble. So why wouldn't you gamble in a more safer environment? And where you're not, everything's not against you. Do you think political बेबसी है लोगों को, that's why they feel like वो बाहर कढो इन्होंने, बच्चियां ਨੂੰ बाहर पहुंचाओ किथा? क्या कहते हो? There's an example. Out of something into the fire. Out of the pan into the fire. Out of the pan into the fire. हाँ जी. वो scenario है ना? Right. ठीक है, things are difficult here, but people are managing, prospering slowly, in some cases losing. but ये आपका environment है ना यार. But over a series of games, you can't always lose. ठीक है. Yeah, ये आपका environment है. जी. ठीक है. आपके पास 101 कोई ना कोई, देखो अपने बच्चे पे यहाँ 50 लाख रुपया देने के लिए तैयार नहीं है कोई, ठीक है, लेकिन उधर 50 लाख देने के लिए तैयार है. कुछ ऐसे लोग भी मैं मिला उन्हें कि जिन्होंने अपने बनाए हुए पैसे कोई जमीन बेच के कुछ करके 50 लाख रुपया लगा के बाहर आ गए मजदूर बनने के लिए, और चले हो 50 लाख उधर लगाते अपनी जात के ऊपर, तो तुम अपना काम बढ़ाते. आपका क्योंकि इतना टाइम लग गया यूके के अंदर, इट्स वेरी अनलाइकली कि आप मूव बैक करेंगे, राइट? सो आप अब प्रैक्टिकली आप वहीं के हैं, पैदा भी वहीं हुए, तालीम वगैरह भी. I've contemplated. I have contemplated. Yeah, could I manage? Not because I've got an issue living here. Naturally, my children have grown up. My work. This goes to the same example now I'm going to quote. Would it make sense for me to leave everything I've done, earned, learnt, UK के अंदर, in the UK to come to Pakistan to start again? Right. It's the same. Vice. Quantum same है, बस flipped है. Flipped. Right, I understand completely. So it doesn't make sense. जो आप नहीं करना चाह रहे यहाँ आके, वो यहाँ से वहाँ क्यों करने जा रहे हैं आप? Right. ठीक हो गए. Right. And that's the gist of it. अभी कोई कहेगा और जी 26 साल बाद कम से कम सेट तो हो गई होती, फॉर एग्जाम्पल, तो यार तुम लोगों ने 26 साल जिस जगह पे उधर लगा के सेट हो जाओ ना यार. आपके वालिद भी थे, आपकी पूरी फैमिली इकट्ठे गई थी, आप 90s में वहाँ गए थे जब माहौल डिफरेंट था. अब लिमिटेशंस नहीं थी ना फ्रॉम डे वन. हमें लीगल नहीं, लाइक हमें कोई पेपर वर्क नहीं करना. वी वर ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स, वी जस्ट वॉक्ड इन एंड वी जस्ट कैरीड ऑन विद लाइफ. वी डिडंट हैव टू गो एंड, आप कुछ भी एक्सेस कर सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, पब्लिक कुछ आप सारी पब्लिक फैसिलिटीज इस्तेमाल कर सकते थे. ये ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से हम टू क्लोज लाते हैं कि यार ठीक है, जो नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, साकिब रसूल सेज डोंट कम अपने इलाके में, अनलेस यू हैव अ टेंजिबल लाइक एक करियर पाथ है आपका, आप इंजीनियर के तौर पे हायर हुए बहुत बड़ी फर्म के अंदर, ठीक है,
ये वाला सिस्टम ये जो है ना कि ये उधर शॉर्टकट में हम उधर सेट हो जाएंगे, ये जो लफ्ज़ है ना हम सेट हो जाएंगे। ये हाँ, जो ये बोलता है वो समझ जाएगा। मैं जब बैठता हूँ ना बच्चों के साथ और बंदों के साथ और फैमिली वाले जो लेके आए, मैं उनकी बातें सुनता हूँ। यू नो द फनी थिंग इज everyone's talking the same, and the next funny thing is I've heard it all before, which is again unfortunate. Ultimately करनी तूने मजदूरी है बाबू, ठीक है? उठा कर ले। Once in maybe you might, I don't know the statistics exactly, but a very fair few might slightly exceed. ठीक हो गया? वो जो लेकिन डेल्टा है, जो करेंसी एक्सचेंज का जो फर्क है, डिफरेंशियल है, वो डेल्टा बहुत बड़ा है, वो लोगों को बहुत अपील करता है। ओके, कि मैं वहाँ आप लेकिन कह रहे हैं कि अब जो कॉस्ट ऑफ लिविंग और सर सारे वो मैं डेल्टा देता हूँ ना सर, वो छोटा ही जा रहा है। No. Goes back to what I said before. Migrant mentality. They're not making a lot of money, but they're not spending a lot of money. यानी अपना पेट काट के टॉर्चर करके पैसे बचा के तो फिर पीछे भेज देना, 2 दूनी 4 करके फिर पॉइंट ही क्या? तो एक साइड इज स्टार्टेड लिविंग, द अदर साइड इज नॉट लिविंग, इज डाइंग। ठीक हो गया? तो जिसको तो तुमने भेजा था प्रोग्रेस करने के लिए, वो तो प्रोग्रेस क्या करे बेचारा, क्योंकि वो तो अपनी हर चीज काट रहा है। तो फिर यही समझ में आती है ना कि आप कह रहे हैं what you're basically doing is you're sending him out so you can live a better life. एक छोटा जवान जो वहां जाएगा इस तरह मजदूरी करने, वो शायद ऑल्टन टावर जाके झूला भी ना ले। बिल्कुल, you probably know people like that. 100%. वो कभी जाके कभी बीच पे बैठ के किताब भी नहीं पढ़ेगा। No. वो जिम नहीं ज्वाइन करेगा, वो सोना नहीं करेगा, वो स्विमिंग नहीं सीखेगा। No new experience will be gained. जब तक वो है ना सिंगल, ठीक है, वो तो चलो जी डंडी मार के थोड़ा बहुत कर लेगा। जिसने शुरू कर दिया ना उधर फैमिली खत्म। मैं अभी भी मेरे मतलब जहन में कुछ लोग आ रहे हैं जो फैमिलीज के साथ उधर आए हुए हैं। So it's saddened to see that how restricted they have to be. You understand? It's very sad to see. So this thought process, मतलब मैंने फिर I've seen people like this. 5 साल लगेंगे सेट हो जाएंगे, 5 साल लगेंगे, और यार 5 साल बाद तो तुम्हारी मत मारी जाएगी। And have you ever seen someone's actual breakdown? Oh my God, one more than dozens. And I'm not saying this just because I'm on this podcast or something. I've seen people break down and just lose hope in life, which is very common there now. In immigrants, they're not living, they're just surviving. Like क्या करना चाहिए, दिन टपा रहे नहीं यार, that's it. Okay, यहाँ भी लोग होंगे ऐसे जो कह रहे होंगे, ठीक है, but the gist of the whole thing is they're still around the same environment. वहाँ ये है कि it just becomes very lonely. बात समझिए? इवन अगर बीवी बच्चे भी हैं तो एक्सटेंडेड फैमिली। और फिर ये भी मैंने चीज़ देखी है कि लोगों ने शुरू में जाके घर वालों की इधर मदद की है, और फिर एक टाइम आया they just cut themselves off from their families back home because तंग आके पैसे दे भेज के। ये भी अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन करना है। No, because they can't afford to live themselves. तो फिर फायदा क्या, गई क्यों थे in the first place? मतलब somebody is coming to my mind right now. I've seen him and I've heard his story. और मुझे कहता है यार भाई क्या करूँ, मेरे तो अपने 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, right? I've got to pay for this. So look, you've got to make sensible moves, right? Yes, हर बंदे का हक है अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का, to live a better quality of life. हर बंदे का हक है. But the choices they're making to try to achieve the goal, in a lot of cases, is a bad choice when it comes to this pay and come across. That's what I'm basically speaking about. That's what you're preaching. Okay, this is not the right choice. That's not the right choice. ये सब ठीक है, लेकिन हम एक और भी बड़ा अजीब सा फिनोमेनन ऑब्जर्व करते हैं। काफ़ी गोरे भी कंप्लेन करते हैं इसके बारे में, अखबारों में भी आता है
कि वहाँ जो सेकंड थर्ड जनरेशन है, जो एक वेलफेयर कम्युनिटीज़ का कॉन्सेप्ट है, ये वेलफेयर जंकीज़ हैं, ये कौन लोग हैं? ये फर्स्ट जनरेशन यार वो जो ऑब्वियसली 70s एंड 80s एंड 90s के मौजें की हुई हैं लोगों ने, ठीक है, गो कि अभी उन्होंने बहुत कट डाउन कर दिया, बहुत कट डाउन कर दिया, लेकिन इट्स अ रियलिटी. मतलब देयर आर जनरेशंस जो उस लूप में फंसे हुए हैं. दैट्स अ रियलिटी. और फिर यही सोच के ना, मतलब आई हर्ड पीपल से भाई वेलफेयर स्टेट है, अभी कुछ हो गया तो यार कम ऑन, इफ दैट्स योर थॉट कि प्रोसेस, फॉल बैक ऑन द स्टेट. या फॉल बैक ऑन द स्टेट. चले ही जाओ फिर. But then, you know, look, the state has realized, the state has been in this state for a long time. So they've kind of tightened up on everything. They've tightened up on everything. And right now there's a housing crisis in the UK. Or maybe this is not, I'm not saying this lightly, there's a huge housing crisis. And on top of that, because there's so many people there, there's a big job crisis as well. क्या फैक्टर्स हैं हाउसिंग क्राइसिस के? फीचर्स क्या हैं? Too many people. Too many people. Too many people, not enough houses. And at the same time, too many people, not enough jobs. मलिक साहब को भेजें हम Malik Saab. वेरी टाउन. Oh, रातों रात का मुका दो. He would suddenly create so many units. While they're supposed to, I think, make, I don't know if it was 180,000 or 300,000 houses every year to keep up with the growth. But they're miserably falling short year on year. So there's a huge backlog. But then you got migrants and all these university students and all that kind of stuff. Look, that's all irrelevant. Don't spend that kind of money and gamble. That is the bottom line. Don't spend that kind of money and gamble. Don't send 22, 23-year-old kids who don't know anything of how to go about, you know, hoping कि यार ये कोई रास्ता ढूंढ लेंगे. एक हमने इट्स डन एंड डस्टेड आपने समझा दिया कि जो फाइनेंशियल एक्सचेंज है वो वर्थवाइल नहीं है. ज़ाती इनफरादी तौर पे मेंटल ब्रेकडाउन, उनका स्पिरिट का, उनके मोराल का ब्रेकडाउन, वो भी एक हमने आपने बताया, आप विटनेस करते हैं कि यार वो बंदा तोड़ देते हैं आप. व्हाट अबाउट जो उसका एक लॉजिकल एंड है कि क्रिमिनल एलिमेंट जो नहीं, एक और चीज़ में डेफिनेटली ऐड करूँगा. अभी ये जो बात तूने की है ना, मुझे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि जी उधर ना बिजली आती है ना गैस आती है. That in itself is enough to break somebody down. Which is fair comment. जी. कि ब्रेक डाउन यहाँ बिजली गैस के चक्कर में हो जाते हैं कि यार पानी नहीं आ रहा, कोई जलालत है. डेफिनेटली that's a breakdown. But वहाँ जो ब्रेक डाउन होता है ना, it's a different type of breakdown. फिर लॉजिक सेज कि भाई 50 लाख रुपया दे के बाहर जो आने लगे तो 50 लाख लगा के अपनी को बिजली गैस को जुगाड़े सेट करो. You know, facilitate your environment with some kind of alternatives. So there's always a way to better yourself here rather than ये जो mindset है ना, the grass is greener on the other side. ये मार रही है. बच्चे ने घर में शोर डाला, मैंने जाना ही जाना है. भाई, it's not what you think it is. It's so important that people realize it's not what you think it is. And literally, 50 lakh, like you say, is a hell of a lot of money. A lot of money. And families तो करोड़ है. कहीं नहीं गया. ठीक है. Now do the maths. अच्छा, चलें, एक बंदा है, फूल हार्डी है, उसने गैम्बल खेल लिया, उसकी फैमिली ने उसको सपोर्ट किया, पंप किया, वो पहुंच गया वहाँ पे. ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है? हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो आपने बताया था कि जब वो यहाँ से जाते हैं तो वो क्लियरली एटलीस्ट मिडिल क्लास तो होते हैं ना, अदरवाइज वो कैसे अफोर्ड करेंगे 50 लाख करोड़ रुपया. वहाँ जाके वो इमीडिएटली वर्किंग क्लास में जाते हैं. अब वो जो एक क्लास एस्पिरेशन उनके अंदर होती है, क्लियरली वो अपनी लेबर जॉब से या वर्किंग क्लास जॉब से वो कमा नहीं सकते. ये पॉसिबल नहीं है कि बंदा यहाँ से मीरपुर से ज़मीन बेच के गया वहाँ पे और वहाँ वर्किंग क्लास के टाउन में रहा, जॉब्स की, तो वो कल को कला के वहाँ पे भी कुछ ज़मींदारा शुरू कर देगा. तो वो गैप पूरा करने के लिए कितना कोई सेगमेंट हमारा क्राइम में गया है. यानी मैं पर्सनली जब यूरोप गया था तो वहाँ पे मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग एक इंसाइट मिली थी कि जेल पॉपुलेशन का काफ़ी सिग्निफिकेंट हिस्सा पाकिस्तानी होता है. बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है. ऑब्वियसली द वीक ब्रेक, डोंट दे, कि यार नहीं चल रही. द वीक ब्रेक and then they think they're tough. In reality, they're weak. They can't take it.
So they go down the option of, see, एक और चीज़ अब unfortunately हमें शायद घरों से ये चीज़ हमें we get it from our families. There's so much emphasis on you got to go out and make money. That's what I mean. Go out and make money. Go out and make money. This is the emphasis. बाहर क्यों भेज रहा है जी अच्छी तालीम हासिल करेगा पैसे कमाएगा अच्छी नौकरी में पैसा कमाएगा. So the emphasis is on making money. When in reality, the emphasis should have been on to go down the right journey. And when you go down the journey which the child enjoys, they will flourish in every aspect. मतलब मोची भी पैसे कमाते हैं टका के. If they're damn good mochis. मतलब मुझे याद है एक दोस्त से मैं बात कर रहा था उसने बताया कि प्लम्बर भी यहाँ बड़े ठीक ठाक पैसे कमाते हैं. हाँ जी अच्छा कैपेबल प्लम्बर हो वो अपनी मर्जी के टाइम आता है और मर्जी के पैसे लेके जाता है जी. ठीक हो गया. तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिग्रियां रहेगी रखें कोल रखो कोल. So it's the journey of life which is going to make you a better person. The emphasis is not on the journey. The emphasis is on making money. And believe you me, yes, everyone's out there to make a good living. तो पैसे कमाने की लालच की वजह से you think a lot of weak people break और वो जुर्म में चले जाते हैं. Definitely. What kind of crimes do you Pakistanis do? Frauds, credit card frauds. Yeah, ये तो पुराने हो चुके हैं. अभी तो खैर वो bank frauds back in the 90s, I remember they used to happen. 2000s में credit card frauds, bank frauds. टक्के मारियाँ. Then drugs. Drugs is a big thing. पाला पड़ा कभी? बहुत से बंदों से I meet a lot of them. I see a lot of them. I know a lot of them. I grew up with a lot of them. Characters, all of them? Item is सारे. But the funny thing is, they forget the art of working. Of a good, honest, It's forgetting the art of actually working. Because you stop working for 10 years. Right? Then trying to get back into it. You won't know where to start. That's what I've observed anyway. Tomorrow I'll fall, I'll get back up and I'll do work again. Because I work every day. I've worked all my life. That's the difference. And money is not the creating stuff is the driving force for me. I enjoy creating stuff. I've seen money, it comes, and like they say, it goes. और इन बच्चों को जो आप बाहर भेज रहे हो भी थोड़ा चांस तो दो ना इनको इधर. Allow them to apply their creativity and their youth and their energy into anything which they're actually enjoying. Let them make mistakes. Let them make mistakes. There won't be 50 lakh rupee mistakes. गार्ड रेल्स लगाएं आप. और सर देखो कितनी मिस्टेक कर लेंगे. 50 साल की कर लेंगे, लाख रुपए की कर लेंगे जी. आप उसको इजाजत देने से मतलब ये है कि आप 50 लाख रुपए की मिस्टेक करने लगे हो. Sending him abroad. And just imagine if that child gets into something which he generally enjoys and he knows his family is supporting him with finances, chances of growth are higher, isn't there? End result will be better. And like I say, everyone I know who didn't go to England, who was my age group, Allah ka shukr, I don't see anyone worse off. I've seen people who are better than what I've done. They've done better here. So look, बराए मेहरबानी अपने बच्चों के ऊपर का ख्याल रखें. अपने बच्चों को गोरों को don't hand these kids over to the Brits or the UK or the or Dubai or any America or places they go to be mishandled. If I put that right, don't allow your next generation to be belittled, because you're allowing them to be belittled, aren't you? When they go there and they feel insecure and they feel taken advantage of. So you know what you're doing? You're messing with your next generation. And it's really unfortunate. You're already putting them a generation back by sending them there. Class-wise, yeah. Right? And then the same time, you're making them insecure.
And when they're going to be insecure, they're going to be taken advantage of. And do you know when they're going back into that room and living on their own? I'll tell you another thing which is very common when you see. I can tell you if a guy is depressed or not by going and having a look at their room. The rooms are so messy you can't imagine. They don't have the energy to get up and pick up the bin and put it outside. I've seen it with my own eyes. And not Pakistanis. I remember an Albanian, an African, Europeans, numerous Europeans' rooms I've seen like this. And when I see that, I say, right, this guy's depressed. Why would you let your child... See, you should be focusing on what can I do to get my child to be full of confidence, satisfaction, right? And he can go out there and he can really, achieve respect and so on and so forth. But you're going the opposite. You're putting him in a place where he's going to feel insecure and people are going to take advantage and it's going to kill his self-esteem and so on and so forth. Because he's where he doesn't want to be. So this is where the parenting has to come in. This is where the elders have to come in. And say, no, I don't think that's right for you. Or, come on, do something here first. Make some money, go yourself. लेकिन फिर उसमें भी ऐसे बेवकूफ़ हैं जिन्होंने पैसा बनाया भी है यहाँ और फिर भी छोड़ के चले गए वापस. हालांकि the lesson should be अगर मैंने यहाँ ये बना लिया इतना पैसा कि मैं वहाँ जा सकता हूँ. Exactly. Then I can clearly make more. You clearly make more. And अपनी इस existing environment में changes लेके आओ. For example, go and live in a different area. मतलब आप एक जिस एरिया में रह रहे हो आप उससे निकल के एक बेहतर एरिया में जाने के लिए तैयार नहीं हो लेकिन आप दूसरे मुल्क में जाने के लिए तैयार हो. There's some weird psyche going on here, isn't there? They won't take the simple route. और फिर मजे की बात, to justify their plan, इस सब बात करेंगे, they know exactly how things are there, but you've just arrived. You don't even know how things are here. Like I told you earlier, I spoke to this guy in Dubai. Taxi driver. हाँ जी, sorry, ये आपने before the podcast आया था. Right. You were in Dubai. I was in Dubai. I spoke to the taxi driver, asked him how long he had been there, what did he gain from living there, and he said, जी मैंने ये चीज़ें अचीव कर ली यहाँ रह के. तो मैंने कहा जी आपके मिलने वाले हैं उधर पाकिस्तान में जो आपके हम उम्र हैं. उन्होंने कहा जी बिल्कुल हैं. मैंने कहा जी उन्होंने भी ये चीज़ें अचीव की हैं जो आपने की हैं. कहते हैं जी मोस्ट प्रोबेबली की होंगी, मेरा ख्याल है. मैं कहा मतलब जो चीज़ें आप कहते हो आपने अचीव की, बहनों की शादी है, वो घर में हालात बेहतर ही हो. तो मैं कहा जो आपके हम उम्र हैं इस वक्त, he was 36 years old, तो आपका क्या ख्याल है उन्होंने भी अचीव कर ली होंगी. कहते हैं वैसे कर ली होंगी. तो फिर मैंने कहा आपने दुबई रह के क्या सीखा या क्या गेन किया. कहता I never thought about it like this. दुबई में अगर आपने बात कर दी है, गल्फ में जनरली अगर आप इमिग्रेंट्स की टैक्सीज देखेंगे ना तो वो बहुत गंदी होती हैं. इट्स सिमिलर थिंग लाइक आई हैव एक्सपीरियंस दिस दुबई के अंदर और सऊदी के अंदर. इमिग्रेंट्स जो वहाँ काम कर रहे होते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, उनकी टैक्सी जिस तरह आपने कमरा बताया था ना, इट्स अ मेस. No, I don't. No, that was your experience. No. You mean migrants, not Pakistanis. Migrants. So I did see that there were certain migrants taxis I sat in. They were really messy. छान आ रही होती है. Yeah, because I think it's the same sort of जिस तरह कमरे को treat करते हैं. Exactly. When you're in a bad place, you can't be bothered. You can't be bothered about anything. So when I asked him this question, मैंने कहा फिर आपने क्या फर्क किया. कहते यार वाकई, कहते मैंने कभी इसी का ख्याल नहीं किया. So if people your age who have gone through 10-15 years of work and have achieved more or less everything you've achieved by living abroad, then what was the point if you've achieved the same? और जो अभी लोग 2023 में या 24 में ये अमाउंट्स दे के बाहर जा रहे हैं, आगे हालात are getting tougher and tougher. मतलब the margins in business are less, the overhead costs are higher, the living costs are higher. Do you understand? Taxes. The incomes are not as much. Everything is more expensive and harder to do.
and you're up against more competition right now. So at this time, you think it's good and wise to go and invest another 50 lakh or 100 or a crore into moving abroad? Where's the logic? I don't get it. I don't get it. Do you think it's slowing down? मुझे तो यहाँ से पता चलता है अभी हमें अभी ये यूनिवर्सिटी का बैच आएगा दोबारा सितंबर में, जो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से 100 बच्चा फिर उठ के ग्लॉस्टर पहुँच जाएगा. अच्छा, इतने ज़्यादा आते हैं? हाँ, a lot of kids came. मतलब एक a girl, I don't know if I mentioned this to you, there was 2 sisters who came. And they worked for me for a couple of weeks. Chicken shops पे? As delivery drivers. So they both were living in one room. So they didn't even take 2 rooms. एक कमरा. So maybe they're around my daughter's ages, slightly older. तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी आप तो कोई फालतू खर्चा नहीं करते होगे यहाँ रह के? उन्होंने कहा जी फालतू खर्चा हम तो ज़रूरत का खर्चा भी नहीं कर रहे. Because they were not getting enough hours to make enough money to pay for that living. So they had to save every penny. Then there's another one who's और वो पढ़ रहे थे साथ साथ? वही वो जो पढ़ाई होती है बिजनेस कॉमर्स. जब मैंने उसके कई दफ़ा मैंने सवाल पूछे ना, जैसा ये कहा जी हम ये पढ़ रहे हैं या अकाउंटिंग कर रहे हैं फलानी चीज़ें, and I would ask them something and they wouldn't have a clue. Another one's a big one, marketing कर रहे हैं, marketing. मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग. Come on, for God's sake. So yeah, it's unfortunate. It's very unfortunate. They think they know what they're getting into, but what they're doing is they're slowing their growth. That's another element that you really understand. They're slowing their growth. आपको लगता है पोटेंशियल किल हो रही है बच्चों की? 100%. That's bad. 100%. सर 10 लाख रुपया आप बच्चे के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते इस मुल्क के अंदर to do something, और 50 लाख रुपया देके आप बाहर भेजो. आप 50 लाख रुपए दे के आप बेहतर एरिया में चलो, let's come to another scenario. All these university degrees, compared to what it was 20, 30 years ago, is it the same? No. Does university degrees have the same value? No. People cannot achieve the same level of understanding through the internet. They don't need those old university degrees to get a normal job. No. Unless it's a specialized degree. बहुत specialized technical degree हो जी. That's something else. So what's going on? If you think about it, what's going on? Why are these people not waking up to this? You just think slow to change है लोग? 100%. We can clearly see that. Do you think जो अभी? No, यहाँ तो चक्कर ये है ना, what they're doing is it's not about, they're not understanding the concept. The objective is to get to England. और बाहर सेट हो जाए जली की तरह. That's the objective. So it's a means to an end. But the means to an end is such a long, expensive, heavy process. Why are you putting your children through that? Before it wasn't that long. You know, it didn't take that long before. It wasn't that expensive before. But now is. So you got to be a bit more logical. आपको लगता है ये वो फास्ट मूवमेंट नहीं कर रहे कि डिसीजन मेकिंग चेंज करें, प्लानिंग चेंज करें? They're basing their decisions on information which they received 20 years ago. Or they're looking at people who were there 20 years ago. So they're basing their decisions on them. And then saying, oh, we the set ho gaya na tha. Oh, bhai, you know, 20 saal pehle gaya sa. Oh, we set ho gaya. वो भी जो सेट हुए होते हैं, अगर आप उनकी क्या सेट हुए होते हैं इंडिविजुअल लाइफ को ब्रेक डाउन करें तो उनकी भी जहनी हालत गैर ही होती है अक्सर. True. And at the same time, they don't have much disposable income. No. They're also saving more as opposed to earning more. Exactly. I think जो आप बहस कर रहे हैं क्राइटेरिया के ऊपर ही, कि जो क्राइटेरिया है सेट होने का, आप वही आप कह रहे हैं इंसेप्शन से गलत है. वो जो 2-10 रुपए ज़्यादा कमा के या कोई दो चीज़ें ज़्यादा बना जाते हैं मटेरियल टर्म्स में, आप कह रहे हैं कि वो एक्सचेंज एक लाइफ वर्थ लिविंग का हिस्सा नहीं बन सकती. You can do better. Right. Chalo, I'll give you a quick, another example comes to mind. A kid used to work for me in 2008, 2009. I think he worked for me for about a year and a half. 2 दोस्त थे, दोनों सेलकोट से आए थे. ठीक हो गया. One of them, a year and a half later, decided to go back.
One stayed there. I've had enough. I've had enough. He went back. One stayed there. The one who stayed there, he married a girl from Czech. Okay? Czech Republic. Czech Republic. And the other one went back home. अपनी मर्जी से जिधर से घर उन्होंने कहा होगा वहां से शादी उदी कर ली होगी. ठीक है? Over the years, he developed a couple of businesses. And this guy developed one business as well. He's throughout lived with his family. And this one is living on his own. अभी मैं सुनने में आगे बता रहा था भाई को बताया मैंने. With a woman who doesn't wipe her butt. Yeah. Doesn't wash her butt. I think he's left it now. It's no longer the case, but it was one of those scenarios. Muslim shower training नहीं हो पाई थी. Well, obviously, over the period of time, you know, but come on, that's the first things we emphasize on. No, it's one of the first things we emphasize on. It's one of the more savage experience से बता रहे वो जानवरों. I also think that really बड़ी funny चीज़ लगती है मुझे कि हम उसको पाकिस्तान में मुस्लिम शावर कहते हैं. जनरली उसको पिचकारी कहते हैं इंडियंस वगैरह. अच्छा. Yeah, but उसको हम मुस्लिम शावर कहते हैं. It's really funny. I used to think why, because if you think about it, ये सब वो मुसलमानी हुई बैठी है. So anyway, when you compare the both guys, they've more or less achieved the same thing. Right. Rather, one I think is still in a better place with his family, with his mother and his father, and you can't replace those things, you know. I was kept in check because I was with my family. मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं ऑनलाइन इसी प्लेटफॉर्म की वजह से बने हैं. I have never met him. काफ़ी लेकिन गुफ्तगू होती है हमारी फ़ोन के ऊपर. बेल्जियम में होते हैं वो. वेरी पॉपुलर ऑन ट्विटर. बड़ी प्रोफाइल है भेड़िए के नाम से है. हमारे पोटोहार के ही वो पोटोहारी स्पीकिंग. ही इज़ अ वेरी फनी कैरेक्टर. सो बेल्जियम वो फ्लेमिश जो हाई फ्रेंच होती है फर्स्ट लैंग्वेज, second language Potohari, third language Urdu, and then English. You know, really funny accent. It's very funny to hear the sort of a French accent Potohari ke andar. Really nice guy though. He's somebody he's second generation I guess. वहाँ पैदा हुए या वहाँ पले बड़े, उनके वालिद वहाँ गए थे. He had a similar experience like you. थोड़े से आपसे छोटे हैं. I think he's in his late 30s. सेट है, बिजनेस है वहाँ पे इम्पोर्ट्स का. बड़ी महंगी वो फिश और उस तरह की चीज़ें जो बड़ी स्पेशलिटी आइटम्स होते हैं. पिछले दिनों अभी वो हॉलीडेज़ के करीब मेरी दिसंबर में बात हुई थी तो कहते हैं यार मेरा तो ये बिजी सीजन होता है. बड़ी स्पेशलिटी महंगी इम्पोर्टेड चीज़ें बेचते हैं वहाँ पे. अच्छा कारोबार है. अच्छा. यू नो अपनी मर्जी से कारोबार चलाते हैं वगैरह वगैरह. वेल सेट है. बट ही बेसिकली सर ये पूरी एक्सपेरिमेंट फेल थी. दिस होल यानी अब तो वो नहीं ऑब्वियसली वापस आ सकते बिकॉज यू नो बेल्जियन है वो. उसी तरह पूरी सोसाइटी में इंटीग्रेट करके वहीं पले बड़े, वहीं स्कूल पढ़े, वहीं सारा कुछ किया. बट वो काफ़ी फ्रैंकली कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट ओवरऑल जो थी ना कि एक जगह से दूसरी जगह में लोगों को बसाना और कि वो इंटीग्रेट करके फुली वो हिस्सा बन जाएंगे. कहते हैं यार ये पूरी एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल में And I feel there was again certain things were able in certain times in certain scenarios. You can't just generalize it as and when. I couldn't get up, leave for Belgium in my 30s. जैसे उसके वालिद गए होंगे 20s या 30s में गए होंगे अपनी उम्र के एतबार से. I can't just pick up right now 2024 के अंदर go there and then expect कि मेरा बच्चा भी उसकी तरह ही होगा, you know, 50 years later. It doesn't work. It's like not going to that. happen. It's not going to happen. बहुत specific windows in time थे. फॉर एग्जाम्पल मंगला डैम के बाद एक जो बहुत बड़ा वीज़ाज खुले थे 60s के अंदर जिसकी वजह से जो बहुत मीरपुरी कम्युनिटी गई थी. अब आपको नजर आता है कि शायद मीरपुरी कम्युनिटी जो तीसरी चौथी नस्ल की है वो कुछ सेट हो रहे हैं, नॉर्मलाइज हो रहे हैं. कोई ये मैं म्यूजिक बनाने लगा हूँ, मैं आर्ट कर रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ. See, the first generation, this is a very good point. I don't think the first generation ever had the ability to get involved in anything outside of just work and finding their creative sort of endeavor के अंदर. जी मतलब ये फालतू ये जो शौक हैं और जो you know hobbies and passions that even makes your life even more miserable. I don't doubt it. Right. So this is all the compromises you have to make. But यहाँ पे the special एक जो caveat है ना is that it's not specific to expat communities. पाकिस्तान के अंदर भी एक जनरली कल्चर है जहाँ पे वर्क ओरिएंटेड, पैसे कमाने ओरिएंटेड कल्चर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है.
और हॉबीज और पैशंस को जनरली नेगेटिवली व्यू किया जाता है। Point यानी taken. इनफरादी सतह के ऊपर भी Point taken. वो बंदा शायद कोई परसूट्स को अपने खुद साख्ता तौर पे इतना जजमेंटल होगा उनके बारे में कि he'll be like, Right. I should be working. So the way we work this out is ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋੜੇ ਉਹ ਮੱਕਾ ਵੀ ਕੋੜੇ ठीक हो गया। दूसरी बात, वो बंदा 50 लाख रुपया या करोड़ रुपया दे के उधर कुड़ने जा रहा है। कोड़ने नहीं जा रहा ना, हाँ। वो यहाँ बैठ के कोड़ रहा है ना, अपने एनवायरनमेंट में कोड़ रहा है, चलो इधर ही कुड़ता रहे। कोड़ता रहे। राइट। एंड somebody wants to do something with their life, वो यहीं कर लेगा। वो यहीं कर लेगा। राइट। Do you understand? No, I understand. So in both scenarios, staying where you're from is a better choice. Also, I've noticed कि मैं अमेरिका में जब देखता हूँ ना उनकी फिल्मों वगैरह में कि टाउन मूव करना, स्टेट चेंज करना बड़ा उनका वो बाएं हाथ का खेल होता है। अक्सर मूवीज में वो कराटी किड भी मुझे याद है कि वो उसकी वो सिंगल मदर होती है और वो पूरी उस वो न्यूयॉर्क से मेरा ख्याल है वो कैलिफोर्निया आ जाती है और वहाँ पे वो पूरी की नहीं। But they're single unit. नहीं, The single unit. मैं इवन कहता हूँ वो अब तो I don't know if you saw the film The Pursuit of Happiness, right? I've seen it. Yeah, Okay. yeah. So when he came across hard times, he had to make or break whatever, and he was on his own. जी। ठीक हो गया? And he made moves and he went to कोई different फैमिली places. नहीं, कोई कुंबा नहीं, Exactly. कुछ नहीं था। Right. कोई गाँव नहीं। इधर सिनारियो ये होता है कि वो बच्चा घर से निकलता है, पूरे टब्बर का उसके ऊपर वो एक्सपेक्टेशन थे कि ये जाके सेट हो जाए एक दफा। ठीक हो गया? उसका प्रेशर अलग कि तो इतने पैसे में दे के निकला हूं, इतने पैसे मैंने बनाने, पीछे 50 बंदे ठीक है। मुंह खोल के बैठे हैं। 50 चलो नहीं, कोई 10 बंदे मुंह खोल के बैठे हुए, मैंने इतना पैसा लगाया है, वो मैंने पूरा कर रहा है, नौकरी मुझे मिल रही कोई नहीं है, चलो अगर मिल भी गई तो मेरा बहुत मुश्किल खर्चा पूरा हो रहा है। अभी मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने आप को बिल्कुल टाइट करके 1.5-2 साल से मैंने सब पैसे जोड़े। एंड देन गेस व्हाट हैपेंस, टाइम टू पे द होम ऑफिस अगेन। राइट। सारे पैसे चुको पैन फिर दियो, Right. back to square one again, and then you start the same journey again. Now by this time 2.5 साल बाद या 5 साल बाद उसका फिर वो लगना है, इंडेफिनेट लगनी है, या उसको राइट टू रिमेन होना है, पिक अप सम मनी एंड बूम, देयर यू गो अगेन। अब उस वक्त तक आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने काम कोई और नहीं शुरू किया कि यार मेरे एक दफ़ा इंडेफिनेट लग जाए ना तो फिर मैं काम शुरू करूँगा। सो नाउ यू आर डिलेइंग योर लाइफ फॉर अनदर कपल ऑफ ईयर्स, बिकॉज एक डॉक्यूमेंट आना है। पर एक डॉक्यूमेंट जब हो जाए, क्या पता हो जाए मैं डॉक्यूमेंट ना आए तो फिर ये ना हो मैं फंस जाऊँ। So what you're doing is you're stopping progression on every level. See, I didn't have this problem. I could do anything, I could do anything I wanted to do. These children or these people who are coming with families, they're tied up for one reason or the other. So मैं तो कहता हूँ they're set up to fail at a very heavy cost. कि वो सारी उम्र ही वर्किंग क्लास रहेंगे, ठीक है, उसमें कोई 10% होंगे जो निकल जाते हैं। जो निकल जाते हैं, But it's a big gamble. It's a big gamble. और 10% उस अच्छा, फिर मुझे ये भी किसी ने कहा, and somebody who actually facilitates these kind of moves, इमिग्रेशन को हेल्प करता है। right? So he coincidentally calls me and he mentions, I'm like, yeah, this is something I'm very against. कहते नहीं, आप अपने पर्सपेक्टिव से, जो तूने आगे बात की ना, आप अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, लोग तो बड़े खुश हैं। मैं क्या, अच्छा 2 महीने जब इधर गुजर जाते हैं ना, and they become like this, and the children and everyone are like, I've got a friend myself right now who's come over with his family against my will, and I asked him not to, but he still came over. वो जो उसकी बेटी जैसा, you can tell वो खुश खबास, she's a happy kid. So very rarely do I get to see her laughing. Maybe the way she would have been laughing when she was around her own environment. Do you understand? Because they're having to make compromises. Compromises which most probably they didn't have to make when they were living at home. मैंने तो वो अच्छे हाथ से earning लोग देखे who've left their earning in Pakistan to start from there again. And every one of them are slightly hard up for money. Majority of them anyway.
There's a category who've got, enough funds. That's a different ball game. मेरे पास अभी जो कई लोग आके काम मांगते हैं, you can tell they haven't got money to survive. But they don't want to call home, उनको परेशान नहीं करना चाहते. So why? Why is the big question? The same time spent in the country you're from will give you the same goals, or allow you to achieve the same goals. It's a journey of learning. You start from your 20s, you learn things up to your 30s, from 30s to 40s, you'll try to perfect what you're doing, and from 40s to 50s, you'll hopefully master what you're doing, and you'll start making good money. Or you'll have a better lifestyle. So the big question जो हमने ऑडियंस को देना है आज वो ये है कि ये आप डिसीजन क्यों ले रहे हैं? Why? The why question. The why question में the funny thing, I'll put it this way. When you ask them why, they give you a perspective because they want to come out thinking they know what they're talking about. But they don't know what they're talking about because they haven't experienced the hardship they're going to come across. Every single person you speak to will turn around and say to you, यार बस हुण आ गया तुम की करिए हुण आ गया तुम की करिए गले पै गई हुण जाना है. When you ask them the question why before they've made the move, उनकी तो बातें ही नहीं खत्म होती, justification ही नहीं खत्म होती. Once they're there. ठीक है, but you're trying to tell me who's living there, right? 26 साल से. Right? You're telling me something, and then my habit is like I'll say, okay, maybe you know something I don't. Aja. And then the conversation's different. And then 2 months down the line, when reality hits and the hardships hit. आपको यूके ने तो नहीं हायर किया हुआ? No, that's true actually. I could actually get him to. Spokesperson. Look, afsoos होता है. Immigrant scared straight stories. I've seen a lot of misery and I've seen a lot of kids not happy, man. Come on. That can't be. That can't be. I think you're able to sympathize more अपने experience और अपने वालिद के experiences की वजह से कि you see yourself in your father in these people into some extent. I see what happens when people have made these kind of decisions. It's just not necessarily about what happened with me, my dad, and stuff like this. I've seen dozens and dozens of people over the years who've gone through this whole process and how it's turned out for them. And you think, यार मैं तो रोज घर अम्मी के पास जाता हूँ. पराठे खाते हैं. मैं तो सुबह उठ के पराठा खाता हूँ, अंडा खाता हूँ उनके साथ. ठीक है, मैं अम्मी को चाय भी बना के पिलाता हूँ. मैं बच्चों के साथ भी बैठता हूँ. मैं बहनें भी आती हैं. मतलब मैं रात को अभी recently I said this a couple of times. I think they're going to kill me if I say this on air. But you should. Right? But I should. Yeah. But you should. I've never even ironed my clothes until about 3 years ago. 3-4 years ago. वो भी कभी कभार मुझे इसी my sisters, they iron my clothes for me. So for me, it's no skin of my nose. But when I see these kids going through hardships, making silly decisions, paying so much money, वो जो ज़हनी मतलब अज़ियत चेक होती है. हाँ, and they're not mentally growing. आपने जो बात की थी ना वो बड़ी खौफनाक लगी थी मुझे कि 17 साल बाद बंदा when he got his documents and वो legal हो गया so he could finally go back Pakistan. वो nearing 40s एक आदमी था, the one who worked with you, और वो basically 20 साल का लड़का था. Because वो confined था to the shop, to his little room, maybe कोई दुकान जहाँ तक other जाता jobs he was doing. Yeah. But like I'll give you another example, right? जब मैं इंग्लैंड गया हूँ and I lived there for 4, 5, 6 years. The first initial. Right, and I came back to Pakistan. I was expecting Pakistan to be the same. But it moved on. But Pakistan had moved on. Mentally, I hadn't moved on because I haven't seen Pakistan grow. Do you see this? So now, this guy who comes across, right, away from the family, away from the country, cannot see them growing. And at the same time, he's not growing himself as well.
because he's trying to be Pakistani. You understand? And any growth coming his way, he's not going to take that on board either, because he initially can't relate to it. ना हियों में ना शियों में वाली जो बात होती है. Exactly. Now, अगर वो प्रॉपर तरीके से एक वर्किंग एनवायरनमेंट में इंग्लैंड में नहीं है, तो क्या ग्रोथ होगी उसकी? चिकन शॉप, ग्रोसरी शॉप, टैक्सी, थोड़े बहुत जो बंदे मिलते हैं, ग्रोथ क्या हो रही है उसकी मेंटली? Because he's not been in a progressive environment. फ्री टाइम में तो सारे ARY और जियो और यहीं के मौलवी देख रहे होते हैं. Exactly. मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो मौलवियों की और न्यूज चैनल्स की व्यूअरशिप है पाकिस्तान में, बिल्कुल होगी. वो वहाँ टैक्सियों में साथ हेडफोन लगाए. और फिर एक और चीज आ जाती है कि you know, this is again going to get me into trouble. But you should say it. But I should say it. Is they get to a place where they just lose hope, and then Alhamdulillah, brothers. Out comes the beard. Yep. Right? Religious trend भी जो है वो, yep. Out comes the beard without realizing कि यार, work out what the problem is. And the problem is you're making bad choices. Do you understand? The beard comes out, but the thought process still doesn't change. Now you got a weirdo with a beard. that creates another dynamic to the scenario. Yeah, I don't doubt it. और अगर वो फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली नहीं गया होता वो इंसान, वो अपनी फैमिली के साथ ग्रो कर रहा है, वो अपने मुल्क के साथ ग्रो कर रहा है, वो सारों के थॉट प्रोसेस के साथ ग्रो कर रहा है, एंड गॉड विलिंग रिस्क अल्लाह ताला आपको देता है, वो इंग्लैंड में भी देगा और वो पाकिस्तान में भी देगा. नहीं, मरने से पहले जो लिखा हुआ रिस्क वो मिलना ही वो मिलना है, बट वो जो अजियत जिससे लाजमी आपने गुजरना है. Such good people have gone to waste. In your experience? Definitely. Such good people have gone to waste. Because at the time they think they know it. They don't know it, man. Who knows it? The person who's been there, done it. We've been there, we've done it. Luckily, I've done it in a better situation. Like I said, I was always with my family. नहीं, but ये एक बहुत अच्छी scared state story है, because you know जो आप describe कर रहे हैं वो एक prison है. It's okay. One of my cousins said this thing to me when I came to England. It was a nice sunny day. We were driving past a lush green area, nice and sunny. And he goes, "Welcome to the sugar-coated shithole." Right? Right. And he'd been there for a while. He'd been there for a while. Welcome to the sugar-coated shithole. Because जो under the surface एक माशरे की गंदगी होती है या उसकी बर्बादी Sir, होती है. देखो, you are working against the grain. Is it the same cousin that was recently here in Pakistan? No. He's one of my older ones. Right. You're working against the grain. Why should you leave where you've been all your life to go to some place and take a gamble where you won't have any, what's the right word? You won't have any grounding, understanding of the place. Grounding in the place. Yeah. And now you're ready to invest your hard-earned family's money or your hard-earned money. Your 5 to 10 years jawani. Right. And your 5 to 10 years of your youth to hope for a better outcome. Work that one out. That's nuts. That genuinely पागलपन लगता है. So it's like somebody asking. If you put it like, the मसला पता है क्या है? जो आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, because you're putting it in a way जहाँ समझ आती है बात की, right? If you put it like that, I think in front of a lot of these families, I think they would reconsider their decision. But मसला ये I've luckily have said this to a couple of people, right? And now you're saying it to a couple of thousand people. That's a job, mashallah, very good. I've said it right now. I've said it to a couple of people और उनकी मत में बात पड़ी. You think so? लेकिन कुछ लोगों का उनकी मत में बात नहीं पड़ी. Do they रुजू करते हैं कि like यार साकी तो ठीक कह रहा था? No, they never. Ego? No. That's one thing I've definitely realized. People never accept when they're in the wrong. Yeah. They never accept it. Very rarely you'll have somebody who'll turn up and say, you know what, my bad. I messed up. Oh yeah, I'm not saying it to get any brownie points. Right. It's no skin off my nose. आजो. Ajo.
Give it a go. Give it a go. Stupidity. I mark it down as stupidity. I've got, okay, since these shops I've had 2.5 years, 3 years now, upteen amounts of people who've come in really bad situations. Come to work at the shop. Come to work yourself. And I've had, मैं कितने बंदों को job पे रखूं? You understand? And before this, I've had businesses, I've had numerous, like 2008, 2009 भी एक rush आया था काफी students का, ठीक है? उसमें जो अच्छी चीज मुझे नजर आई थी वो ये था कि a whole batch of students came. 2008-9 में. 2008, 7 और 9 के दरमियान, something like this. And a lot of them went back after 3, 4 months, 5 months. Because there were too many of them? No, because they were from better backgrounds. They hadn't spent so much money. वो सिर्फ फीसें दे के आए थे इधर या जो nominal सी. उस वक्त शायद हाँ उस वक्त ये colleges हुआ करते थे. If you can remember these ghost colleges. जी. So all they spent was the initial couple of £1,000 with the ticket to come over. पाकिस्तान के भी कुछ हालात बेहतर थे. ठीक है और यहाँ क्या नाम है they didn't have to pay the full fee to come. They had to pay it once they've come to the UK. So initial, because it was only maybe £3,000-4,000, they came over and they realized that hang on a second, this is crap, this is rubbish. Pound का रेट भी इतना बुरा नहीं था उस वक्त. नहीं. तो maybe 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया कोई लेके आता था. So I saw a lot of students just get up and say, forget it, I'm going back because it's in the year. अभी मसला ये होता है ना कि जब 50 लाख रुपया लगा दिया, right, ठीक है, या 25-30 लाख रुपया लगा दिया. This better work now. Right, this better work. But if you're on the wrong train, you're not going to get to your destination. Your best bet is to get off, get on the other side and go. कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे. चलो, then वही चीज़ है, आप progression अपनी growth slow down कर रहे हो ना. हर बंदे ने पहुंच जाना है. कहीं ना कहीं. हर बंदे ने पहुंच जाना है. But you make wiser moves to get there. To get there. You're distancing your own children from you. You know there's a distance which is created. You can't make that distance back then. It's gone. So it's like you worked all your life to lose what you worked for. Does that make sense? Because सारी जो थी वो जो माल की कमाई थी वो सर्विसिंग ऑफ द फैमिली के लिए थी. और ये होता है ना कि सारे खुश रहें, सारे इकट्ठे रहें, सारे प्रॉस्पर करें. फैमिली तो खो दिया आपने. अभी सारे इधर बैठे इंजीनियर डॉक्टर बनने पे तो एक जरा बेचारा टैक्सी ड्राइवर है. उठाई. हाँ क्योंकि वो उस टाइम आखना समझ जा सा. ठीक है ये होता है ना. बाकी नहीं कि एक चला गया वो इधर बैठ के अच्छा प्रोफेशनल मिडिल क्लास लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं. वो बेचारा तकलीफ लग गया टैक्सी ड्राइवर पड़ गया. ठीक है, he might be making more money than them. But like what is he giving up? What's he giving up for it? And it's a journey which 20 years ago was different. 30 years ago was different. Today it's different. It's not the same journey. It's a much more difficult journey. How do you visualize this your thought process है आपने? How do you जो आपने visualize किया? How do you apply this to your children, for example? अगर उनके अंदर एक डिज़ायर पैदा होती है, आपने कहा क्रिएटिव प्रोसेस को एक्सप्लोर करें, यूनिवर्सिटी जाएं ना जाएं, पढ़ाई करें, फिगर देमसेल्व्स आउट इन देयर 20s, राइट? आप उनको गार्ड रेल्स के साथ, विद गार्ड रेल्स, आप उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ के अंदर गलतियां करने देंगे कि यार उठो गिरो, ठीक है, ये उम्र है. What if one of them has a similar thought? I would try in reverse. कि मैं तो पाकिस्तान जैसा. I will try. No, see, if one of my children came up with an idea of going to Pakistan, I would be so inclined to assist them because it's a developing place, opportunities, so on and so forth. फर्क बात है. Okay. If they came up with a crazy idea, yes, I can understand the predicament of parents. I'll try my best. Logically trying to dissuade them, get through to them that consider what you're doing. Like, I think I've had similar conversations with my children. You know, my children come up with some wacky ideas, you know. Has anyone of them wanted to come to Pakistan yet? No, they haven't come up with that one yet. Right. But they've come up with some wacky, crazy ideas. So I have to kind of give them my ear, and then I can't say this as well, because now they're going to use this against me as well, aren't they? But you should say it. I should say it. So, you know, I kind of hear it out, and I try to make them understand, come on. There's better ways of trying to achieve what you want to achieve.
That's the alternative I could try to give them. So this is more than just an economic decision जो लोगों को make करना है, कि ये एक generational decision है, Generational decision. familial decision है, एक बड़े लेवल के ऊपर, और इसमें मशवरे का एलिमेंट मैंने देखा बहुत कम है कि बाहर लोगों से मशवरा किया जाए. यहाँ पे प्रोफेशनल्स को कंसल्ट किया जाता है, जो एजेंसीज हैं जो इमिग्रेट उनका तो इंटरेस्ट आपको बाहर भेज, वो कुछ बेचना चाह रहे हैं, उनकी कमीशन इन्वॉल्व है. बट सिला मशवरा अच्छे उलमा से पूछें, आप बड़ों से पूछें, फैमिली में एक्चुअली बैठे, even and with people who actually have lived there. the first person I think they need to speak to is a person who's actually living abroad. I was coming to that, the person who's actually living it. बाकी यहाँ जितने भी रह रहे हैं सारे कहेंगे आप जाए. No. It doesn't work. Okay, let's stop it here, for example. Another comes to mind. Why are you asking anybody? Think about it logically. You're sending your child to go and be settled in a place based on how people did 20 years ago and 30 years ago, and times have changed now. बड़ी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रिक्वायर्ड है इसके लिए कि टाइम को वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल करना. आप सोचो ना कि 70s में 80s में कोई गया, 7 लोग होते हैं यार जो भेजते हैं अपने बच्चों को. ठीक है, चलो ये भी डाल दो. फिर उनकी आसानी के लिए, उनकी थॉट प्रोसेस की आसानी के लिए चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा कहाँ हैं? जहाँ आप सब कुछ जानते हैं या जहाँ आप कुछ भी नहीं जानते और नए से सीख रहे 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में. You framed it quite well. ठीक है, चांसेस ऑफ सक्सेस कहाँ हैं? और फिर आपने पैसा इन्वेस्ट करना ना, आप किधर पैसा इन्वेस्ट करेंगे? जहां आप थोड़ा कुछ जानते हैं या जहां आप कुछ भी नहीं जानते? So which way are you going to invest? I've asked you to put 50,000 rupees in something. Your first port of thought process will be where I know. You're putting it in where you don't know. Based on what? किसी ने कुछ कहा था? Hearsay. So now I'm saying with my hand on my heart that I've got nothing to achieve from this. I've got nothing to gain from this. But वो जो बच्चे उधर रुल रहे ना, अभी तो social media, go on there and check. People are, बच्चे बहुत रुल रहे होंगे, जगह भी ढूंढ लेंगे, अपनी जगह बना लेंगे, ऐसा की माने होते हैं ना, अल्लाह खैर करेगा. इधर क्यों नहीं खैर करेगा? Exactly. So staying in the most, कुछ इसके अंदर गोरा कॉम्प्लेक्स भी इन्वॉल्व है, कॉलोनाइज्ड है मेंटली हम, कि यार उधर गोरों को बड़ी समझ है यार, उनका माशरा बड़ा अच्छा है. इज इट लाइक साफ सड़कें? अभी आ रहा ना रिवर्स सारा, अभी देखोगे उन्हें सारा रिवर्स होना पे तुम होना चाहिए उससे पूछो when the game's over. जी मैं तो ये कहता हूं, it's too late in the movie now. Yeah, it's too late now. It's all the information is available on the net now. लाखों बच्चों की आप उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं. You should know that. There's a lot of kids who have these grand fantasies about Europe and पता नहीं क्या freedoms or civil liberty. Okay, I was going to say something really bad. Okay, right. The internet's available. Do your own research. But ये तरीका नहीं होता पैसे लगा के वहां पहुंच के हम देखें. अब तो रसाई भी है. Do you understand? You've got. अब तो आज के ज़माने में तो बहाना भी नहीं है. Exactly. I mean, you can directly see what's going on उनकी society के अंदर. I do remember this. I think we all went through this, even though I went there in '98. When we used to call our friends back home, within 6 months of a year of being there, we were all moaning. I remember this one guy used to be a friend at one time. He wrote me a letter when he was in England. Pakistan se gaya hua tha, ek achhe ghar se gaya hua tha. Idhar aake he was living miserably, and he wrote a letter saying ki yaar bas Don't come. bribe is all there, and he was advising me how I should keep making sure that my education stays good and all that kind of stuff. And become something in Pakistan. Yeah, become something in Pakistan. Wow. And there you go. So please, unki umeedon pe pani mein nahi pher raha. I'm trying to get them to divert their thought process and investing in themselves in a place where they're investing in themselves and in their environment as opposed to going in a away. place where they're from. But they belong. They understand the situation. Let's say, for example, hypothetically speaking, 1,000 people went to the UK, right?
multiply that by 50 lakh rupees, right? So that comes to what, 50 billion? Yep. 50 billion rupees spent in your own economy. What would it have done? ये प्लॉट बेच के यूके बच्चे को भेज देंगे, प्लॉट बेच के उसके ऊपर पैसा नहीं लगाएंगे. क्या साइकी है यार. कारोबार में ना 100% नुकसान नहीं होता. 10% होगा, 15% होगा, 20% होगा. And then you have to come up with ways to fix the strategy. बात समझ गए? You have to come up with ways to fix the strategy. Now, ये जो काम कर रहे हैं ना, इसमें 100% नुकसान है. ये जो काम अभी कर रहे हैं ना, जिसमें ये एजेंट को पैसे दे के और जिस तरीके से बच्चे भेज रहे हैं, 100% नुकसान है. ठीक हो गया? It's like, अभी I'll give you a phenomena which people are doing in the UK. वो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उसके बाद पैसे जोड़ते हैं. जिस टाइम 40, 30, 25, 30 हज़ार पाउंड हो जाता है ना, वो जाके घर खरीद लेते हैं मोर्गेज पे. ठीक हो गया? वो जो 25-30 हज़ार पाउंड खर्च किया ना सर, और वो मोर्गेज के लिए, डिपॉजिट के लिए डाल दिया, अभी वो मोर्गेज देना शुरू कर रहे हैं, किराएदार डाल देंगे उसके अंदर, उसके मतलब जो शॉर्टफॉल होगी वो पल्ले से डाल रहे होंगे. जी जी. और फिर खोते ही का काम करना शुरू कर देंगे दोबारा, अपने भी नहीं खर्च करेंगे वो पैसे. ठीक हो गया? नाउ कम 4 years डाउन द लाइन पैसे जोड़ेंगे और फिर सर चैल्टनम में लेकिन रियल एस्टेट एम्पायर नहीं बनता ना इसके अलावा. अच्छा है सर, ऐसे ऐसे जुड़ते रहेंगे. उनमें से किसी के अंदर ये सोच नहीं आएगी कि यार मैं वो 25,000 30,000 लगा के एक कारोबार शुरू कर लूं और वो मैं कारोबार को ग्रो करूं, और जब वह ग्रो होगा आई कैन बाय एनीथिंग आई वांट. The masses don't think like that. I've seen people pick up the money 10 साल बाद, sink it in a house and then go back to work again like a donkey. You have to start thinking differently. You have to start doing things differently. If you want to achieve, times have changed, yeah, come on. People don't need those university degrees for you to get a job. We know for a fact people who are capable and able and learned enough. Mashallah, you've employed a lot of engineers and business types in your chicken shop. Grilling chicken and doing deliveries and, marinating. But marketing के लिए help भी आती है उनकी marketing degree से. I've had to employ somebody else from Pakistan to do the marketing. Right. Because every time I asked them a question, they didn't know where to start. Because they have no practical experience. Because they're not familiar with the environment. Yeah. Classic. But I don't know. Anyway, I hope the message comes across. No, I think it's quite people clear. understand. खुदा का वास्ता अपने पैसे को wisely इस्तेमाल करो. Where can people reach you for these questions? Don't reach me. I don't want to, listen, this is just a one-off. Yeah. It's just something I'm very should we tag the chicken shops? No. I'm very stay away from me, stay away from my family. I don't want to know. Don't come to the chicken shop. No. All I'm saying, this is a bit passionate about it because I can see a lot of suffering. That's nice. It's kind of you. Please use your money and your decisions wisely. England के अलावा दुनिया बसती है, ठीक है ना? Just imagine 1,000 people don't do it. Look at the kind of money comes into this place. Or stays here. And stays here and creates jobs and so on and so forth. You know, the old Esprit State saying, smart moves. Yeah, smart work, smart moves. Smart moves. Yeah. I remember there used to be that file cover with the chessboard on the back. Yeah. Smart moves. Esprit State, what a throwback. Exactly. It just came out. I just remember. So make wise moves. Come on, make wise moves. You can't be. See, there's this copy culture. फलाने ने किया था तो करेंगे तो हो जाएगा. Everything's achievable where you want to do it, right? But do it in a more familiar environment which is kinder to you. Easier for your children, for your family, as a family. आपकी ज़ात के लिए. Support, everything. आपकी ज़ात के लिए. I think it's easier for the singles to get this message.
The married ones, I think their wives won't let them go. The married ones, the wives will make them go because they just want to get out of this place. They want their they want to be away from the in-laws. exactly something like that. In-laws को भी सोचना चाहिए कि क्या वजह है, Exactly. क्या वजह है. That taking on a harder step just for their bit of freedom. Technically, यही है वो ना. फ्रीडम की सिचुएशन हमें खुद यहाँ क्रिएट करनी चाहिए by investing in ourselves and Exactly. environment. जी. So many different angles to this one. I didn't think of that. I'm glad you आपने अपने anecdotes share किए. I would have hoped that you would have been more open, but obviously privacy की खातिर आप थोड़ा सा शर्मा के बात कर रहे हैं. I just realized when I started talking, I don't want to let go of too much. लेकिन I didn't realize. no, thank you for coming and The message is important. Forget the rest of the I think the rubbish. message is alhamdulillah repeated था, काफ़ी clear था कि just make your decisions wisely. Actually think about पैसे कहाँ लगा रहे हो, वक्त कहाँ लगा रहे हो, जवानी कहाँ लगा रहे हो. Oh, very important. अपनी ज़ात और अपने माहौल पे इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान के अंदर रह के अल्लाह करे कल आपकी सिचुएशन बेहतर होती है. Go out with a bang. Go there in a place where you are going to be well looked after on your own terms. on your own terms and go and do what you have to do. लिव के नहीं आपने जिंदगी जीनी की. ये जो तरीका है ना कि भाई जाएंगे तो कोई रास्ता निकल आएगा तो ये हो तो वो हो तो कोई अल्लाह बेहतर करेगा. Come on, man. No, that's wrong. Smart moves, boys. Smart moves. Saqib Rasool, thank you so much. Thank you very much. Allah Hafiz.